मैंने लोगों के भी बीच खड़ी देखी तन्हाई, जितनी कमाई उतनी ही वाहवाही। मेरे पास कोई डिग्री नहीं दिल जीतने की, दिल से ही गाई और कर दी चढ़ाई। मैं कल्ला भूखा बैठा रहा कई दिनों तक, बैरी खुशी होए सोचे चले गए अलग। मैंने जाने के ये सारे मुंह मारने को छोड़े, क्योंकि कुत्तों के हिस्से का शेर खाता नहीं हक। ग्रुप बना के साले कर दे बुराई कदे, गैंग असली ना आके चक ले। 2-4 दिन दी ये टेम्पररी हाइप, एनू काका सांभ के तू रख ले। और आया मेरा कई बंदे फूक गए कभी, फिर मेरे सामने नहीं टकरे। वो क्या ही सच से निभाने यारियां हो जिन्हें खुद के ईमान से ही खतरे। और आया मेरा कई बंदे फूक गए कभी, फिर मेरे सामने नहीं टकरे। वो क्या ही सच से निभाने यारियां हो जिन्हें खुद के ईमान से ही खतरे। प्यार जुआ है पूरी ना इंसाफी, छीन लिया नेकी जिसने बांट दिया पापी। मैं बांट आया सब फिर क्या ही चालाकी, जिंदगी जो मेरी कभी किसी ने ना झांकी। दूर से ही खड़े मुझे देख रहे, ये छू नहीं सकेंगे इतनी दूरियां बना दी। मैं कल्ला दुखी बैठा रहा कई दिनों तक, बैरी खुशी होए सोचे राजा गया थक। मैंने जान के ये सारे मौका मारने को छोड़े, ताकि पता चले थाली में था छेद कहाँ तक। वक्त बनाता कोई बनदा नहीं बैठी अदा, कोटता दुनिया ही बोल दी। माइंड ना करी मेरे हत्था च मशूक काका, छातियां पूछ के नहीं खोल दी। और आया मेरा कई बंदे फूक गए कभी, फिर मेरे सामने नहीं टकरे। वो क्या ही सच से निभाने यारियां हो जिन्हें खुद के ईमान से ही खतरे। और आया मेरा कई बंदे फूक गए कभी, फिर मेरे सामने नहीं टकरे। वो क्या ही सच से निभाने यारियां हो जिन्हें खुद के ईमान से ही खतरे। प्यार तू मांगे ते वफा जाने मन, मेरा ध्यान बातों में ना रखा जाने मन। हुस्न की गलियों में फिरता मैं रोज, मुझे तेरी भी सहेलियों ने तक्का जाने मन। इल्जाम मेरा मैं ना तेरा हुआ, ये भी घाव मेरा तूने छेड़ा हुआ। रिश्तों से ज्यादा सच्चा पैसा मुझे लगता है, तेरा हुआ ना कभी मेरा हुआ। खेलिए मेरे सामने कैसे कर जाती हो, एक दिल को सब में बांट के कैसे रह पाती हो। ओ तेरे यार बतेरे मेरी बस एक माई जेब, देख के प्यार नहीं कर दी। नाम और शोहरत और मोटी है कमाई, तीनों राजा की बाहों में मरती। और आया मेरा कई बंदे फूक गए कभी, फिर मेरे सामने नहीं टकरे। वो क्या ही सच से निभाने यारियां हो जिन्हें खुद के ईमान से ही खतरे। और आया मेरा कई बंदे फूक गए कभी, फिर मेरे सामने नहीं टकरे। वो क्या ही सच से निभाने यारियां हो जिन्हें खुद के ईमान से ही खतरे। Well, I guess there's nothing for us to worry about. We're the ones that have the bomb. You already know what it is. It's Kingsland, baby. Ain't nobody can stop us right now. King is in the building. What's up? क्या हाल चाल लॉन्डो? We are back with another live stream. बट आज हम लोग दो लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, एक अभी और एक रात को। आज थोड़ी सी वॉच पार्टी करेंगे जो हम लोग चालू किए थे, याद है आपको? पहले पोकेमॉन यूनाइट की। तो कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? एक सेकंड दे दो चीचा, एक सेकंड दे दो चीचा, हमको ज़रा देखने दो चीचा, क्या चल रहा है चीचा? सही चल रहा है, सॉर्टेड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। वी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। बढ़िया, आप बताओ कैसे? हेमलो स्काउट है, हेमलो स्टोरी डाल दो। स्टोरी डालनी थी ना? हाँ ना यार, स्टोरी नहीं डाला, किसको पता नहीं है। लेट मी पुट सम स्टोरी। भाई मैं ओवर साइज टी शर्ट, पता है मेरे को? ये टी शर्ट भी ये होने लग गई है, लूज होने लग गई है। आई एम हैप्पी।
डाल दे सॉरी, क्या डाले डालते हैं। हेलो गाइस, हम लोग अभी लाइव यूट्यूब पे वॉच पार्टी हो रही है पोकेमॉन यूनाइट की। तो जितने भी पोकेमॉन फैंस हैं लिंक पर टैप करो, जल्दी आ जाओ। वन टेक भाई। रात को आज क्या खेलेंगे मैं सोच रहा हूँ, स्नैक्स के साथ है। स्नैक्स में जोकर 3v3 वो खेलते अपन। कौन सा बोलो गेम पता है? रोलो चैंपियंस। डन। भाई क्या क्या ही हाईलाइट लिख जाती है भाई। भाई तो निशोर खेल के मजा आया भाई। एक्टर व्हाट नहीं है अभी, अपनी एक्टिंग से इतनी अच्छी नहीं है, नहीं हम उस लेवल पे। हम एक सिंपल सी गेमर है। लास्ट का स्नाइपर अच्छा मारा यार, थोड़ा सा चोक हो गया पता है आज। सेकंड गेम पे हाँ, पहला दो गेम पे आई फील कि हम लोग और बेटर कर सकते, पर अच्छा लैंड से पहले ये सब चीज़ें ना क्लैरिफाई हो जाती है ना, तो टीम की जो दिक्कत है वो सॉर्ट हो जाती है। आज मैं इसलिए खेला क्योंकि आज सैयद अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं खेल लूँगा। और बेस्ट चीज़ है कि जितना भी अपना एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3 साल में अपने लॉन्डो को मिलता है, तो उससे उन लोग लैंड से पहले बेटर हो जाते हैं। कोई साथ में है क्या वॉच पार्टी का? यार अभी फ़िलहाल मर्सी को मैंने कॉल किया था, पर मर्सी आई थिंक सो बिजी है, नहीं तो मैं रहता। अब वे आउट विथ माम्बा। इसमें एसडीएल की टीम नहीं है क्या आज? आज नहीं है, आज एसडीएल की मैच नहीं है, पिछले बार थी। आज उसको मैं लिस्ट बोलता हूँ किस किस की मैच है आज। गैस आज हम लोग का पहला मैच रेवेनेंट और ट्रू रिपर्स की। अगर लोगों को नहीं पता, सब लोग बोले कि इंडिया की बेस्ट टीम रेवेनेंट है राइट, करेंटली स्टार्स के हिसाब से। तो रेवेनेंट वर्सेस ट्रू रिपर है, फिर गॉड रेंज वर्सेस मार्कोस गेमिंग है, 2 है। और सब लोग बोलते हैं कि ट्रू रिपर ऐसी टीम में किसी को, मतलब मर्सी ने जो बताया मेरे को, ट्रू रिपर ऐसी टीम में जो किसी को भी हरा सकती है। तो मतलब ऐसा वो वाला की कार्ड है उन पे, उन लोग ऐसा हराने के लिए किसी को भी हरा देंगे। फॉर फन ड्रिंक एंड से वो नहीं रहे उसमें, फिर क्या हो जाता है कॉन्ट्रोवर्शियल था। फॉर फन अपन कर लेंगे, फिर लोग उसको कॉन्ट्रोवर्शियल में मिलेंगे। मुझे खेलना है आपके साथ, क्या खेलोगे बताओ? प्ले COT सून, COT ऑल्सो कैन प्ले, बट अभी मेरे को है ना, ओ भाई ये क्या है पता है? एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि आप जब हेवी वर्कआउट सडनली करते हो ना, या फिर डाइट वाइट मेंटेन करने लग जाते हो, भाई आपको 3 चीज़ होती है। एक तो चक्कर ऐसा आता है पहला, दूसरा आप गुस्सा बहुत आता है, नहीं पता क्यों। ये मेरे साथ हुआ है पहले भी, पिछले साल हुआ था। रेवेनेंट इजी विन, लेट्स सी। मैं तो ऑब्वियसली मैं ट्रू रिपर्स बोलूँगा। मेरे को देखना है ट्रू रिपर्स का जो की बोलते हैं कि ट्रू रिपर्स कभी भी किसको हरा सकती है, तो आई वांट टू सी दैट साइड। और 2 महीने भी हो गया है जो सेइंग। देखो शशांक पधारी भाई, मेरे को बता, मेरे को वेट गेन करने में कितने महीने लगे थे? सबके दिमाग में लॉजिक है कि मैं इसकी मैं बाकी लोगों जैसा वो क्रैश डाइट नहीं करने वाला हूँ। सो प्लीज़ मेरे से वो एक्सपेक्ट मत करने कि मैं पतला हो जाऊँगा और कूल बन के दिखाऊँगा, वैसे नहीं भाई। मैं अपने तरीके से स्लो एंड स्टडी प्रोसीजर जो होता है वो मैं हेल्दी वे में करूँगा। मेरे को किसको प्रूव नहीं करना है भाई, समझो। मेरे को इतना नॉलेज है कि मेरे बॉडी के लिए क्या ख़राब है, मेरे बॉडी के लिए क्या अच्छा है। आंटी सिर्फ रिक्वेजर स्टील से हारती है, हैं? मेरे को बताओ RNT की कितनी विन स्ट्रिक रही है? काशदी कब आ रही है? वो तो गई ना अभी, सिंगापुर गई है 10 दिन के लिए, वहाँ से आएगी वो। वेट गेनिंग इज हार्ड यार, ये सब मच्छर लौंडे को पता है। वेट आई फील लाइक यू नो इट। बहुत सारे जो जिम रेगुलर जाते हैं, देखो मैं फिटनेस टॉपिक में बार बार नहीं बोलना है, फिर नहीं तो लोगों को लगेगा कि ज्ञान दे रहा है, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं इतना। वेजिटेरियन हूँ, वेट गेन भाई बेस्ट भाई। पीनट बटर ब्रेड, केला, फिर तुम्हारा ये पनीर, दबाओ भाई दबाओ। It is going to be Thea Skyro. It's a 10-minute match. क्या देखेंगे? ये नहीं सुनना हमें, हम मैच देखेंगे सीधा। हारती है वह जीतती है, फिर हारती है फिर जीतती है। अरे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? लेफ्ट फॉर डेड कब सेम स्क्वाड जब वापस आएगी तब। टोफू बेस्ट है भाई, मेरे को नहीं पता टोफू क्या होता है यार, सुना हुआ है पर टोफू कि नहीं पता। इंस्टा में लाइव कब आओगे? इंस्टा में लाइव क्यों आना है? आएंगे उस ओकेशन में। इंडिया में वेयर बेस बढ़ेगा पोकेमॉन का, क्या लगता है ब्रो? धीरे धीरे लोगों को जैसे अपॉर्चुनिटी दिखेगा, इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी।
अभी कैसे कि लोगों को दिख रहा है कि पोकेमॉन यूनाइट में अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बढ़ता है भाई। और आई फील हमारे डिस्कॉर्ड में तो आपको बहुत लोग मिल जाएगा। मेरे पास भी पोकेमॉन यूनाइट है भाई। हाँ तो भाई खेलो यार, कौन मना किया है भाई, मज़ा आएगा आपको। टोफू गोल्डी पनीर, है वे पनीर बोलो ना भाई, पनीर बोलो ना, अंग्रेजी में को टोफू बोलते हैं बे। कल स्ट्रीम क्यों नहीं किया? कल यार एक स्पॉन्सर्ड वीडियो गई थी ना चैनल पे, एक मोबाइल रिव्यू था यार। मेरे को ये नहीं पता क्या हो गया, पता है बहुत माइंडफुक हो रहा है मेरे को इस चीज़ से। ओ भाई भाई, टोफू एंड पनीर इज डिफरेंट। अब नहीं पता, थोड़ा टायर्ड लग रहे हो भाई, मत पूछो भाई। कल पागल ऐसा खेले हम लोग ने गेम रात भर। गेम का नाम नहीं लूँगा बट या टोफू पनीर जैसा होता है। प्लीज़ टेक माई फुल नेम, लाल परा, बिग फैन, शाउट टू ऋतिक जैन भाई, शाउट आउट टू ब्रदर। हैवी वॉच पोकेमॉन इन योर चाइल्डहुड? यस ऑब्वियसली भाई, कैसी बात कर रहे हो? किसने, टेल मी ऐसा बच्चा जिसने पोकेमॉन ना देखा हो। कभी कभी उर्वेश के साथ भी स्ट्रीम कर लिया करो। उर्वेश थोड़ी देर रहता है। मैं तो सोच रहा था कि पोकेमॉन का मैप और बड़ा हो जाए, मज़ा आ जाएगा भाई। मोबाइल ऐसा हो जाए और मतलब और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपडेट में लोग बड़ा करते हैं, मज़ा आ जाएगा। वॉरजोन खेलो नहीं रे, आज रात को चिल खेलेंगे। टी शर्ट अच्छी लग रही है भाई, ओवर साइज है, अच्छी, इसमें पूरा आ जाता हूँ। ये देखो, ये ओवर साइज है पूरी। ये क्या है? ओवर साइज है भाई ये। कोई अच्छी वाली बात ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कपल टी शर्ट, व्हाट द फक इज कपल टी शर्ट? ये क्या होता है कपल टी शर्ट? मॉन्स्टर जो लाइट ऑफ है, ऑन कर देते यार, कितना टाइम लगता है ऑन करने में? ये लीजिए भाई। पता है मेरे को एक बात बताओ, आज मैं एक चीज नोटिस किया है, ठीक है? तुम मेरे को बताना कि आवाज़, मैं इधर देखो, इधर इधर बात कर रहा हूँ, मैं इधर बात कर रहा हूँ, आवाज़ जिस इंटेंसिटी मारी है, ठीक है? अब देखना, मैं देखो गाइस, मैं भी चिल्लाने नहीं वाला, ठीक है? मैं चिल्ला रहा भी नहीं, एकदम धीरे बात करो, ठीक है? मेरे को बताना कि आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं चिल्ला नहीं रहा, पर नॉर्मल वे बात कर रहा हूँ। भाई बताओ, आवाज़ आ रही है? ये बताना कि वहाँ उतने दूर से आवाज़ आ रही है क्या? भाई कैसे कैसे? हेडफोन का माइक नहीं, माइक ये रहा, मतलब मैं दूर जाके भी बात नहीं कर सकता। भाई क्या स्कैम है ये? हेडफोन्स का माइक नहीं है ये रहा माइक, को ये रहा माइक, यहाँ रखा हुआ है, माइक इधर रखा हुआ है। भाई इतना दूर से पकड़ रहा है आवाज़, भाई म्यूट ही करना पड़ेगा भाई, फिल्टर ऑन करो। He will also be knocked out. He tried to run away, and it looks like Rayquaza is going to be going in the favor of none other than. ये हाईलाइट चल रहा कुछ? अरे लॉल भाई, क्या खोल दिया था? यस, मैं कुछ बोल नहीं रहा, चलने दो भाई। द वे, जेन्युइनली स्पीकिंग, अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो इन गेमिंग, अभी तो हम लोग का जो गेम है वो बैन है, सो इफ़ यू आर जेन्युइनली सोच रहे हो कि आप कुछ और ट्राई करना है, तो यू मस्ट ट्राई पोकेमॉन। नो प्रमोशन, बट मैं जो गेमर्स को बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर पोकेमॉन पसंद है या फिर मोबा गेम्स का आइडिया है, ट्राई करके देखो, मज़ा आया तो इसमें भी करियर है। सच बता रहा हूँ, पैसा है। मैं करियर नहीं बोलूँगा, पैसा है बोलूँगा, क्योंकि लोगों, आज के डेट में लोगों को पैसा इक्वल टू करियर होता है, तो इसलिए पैसा है, ट्राई करो।
SL 55 करो, कर सकते हैं यार। पोकेमॉन यूनाइट SL 55 मैं पूछता हूँ, अब भी जस्ट पूछता हूँ गाइस। पोकेमॉन 5v5 करना है, नमन टैग। मैंने पूछ लिया, हाँ भाई जैसे हम लोग वैलोरेंट को खेल करते हैं, जस्ट लाइक वैलोरेंट वी कैन डू पोकेमॉन 5v5। मर्सी क्या, अरे तुम्हारा अबे तुम अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो भाई तुम्हारे भाई को, हैं? दैट ज़ॉम्बी गेम टुडे, या वी नीड द सेम स्क्वाड ना। करो वन पीस बाउंटी रश खेलो। नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता वो। एसएल इस्पोर्ट्स लाने पर सीसी भाई तब मार पड़ेगा ना हमें। अपने पता नहीं एकदम वेजिटेरियन में क्यों शिफ्ट हो गए थे, हो गया था, मेरे को चेक करना था कि क्या डिफरेंस आता है। तो अभी मेरे को नहीं पता, मेरे को पर्सनली ऐसा फील हुआ कि भाई मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ, देखो ये चूतिया बात भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं वेज डाइट पे जब था रेगुलर, तो मेरे को बॉडी पेन 3 दिन से ज़्यादा रहता था। और देखो ये चूतिया बात हो सकता है, आई कैन बी रॉन्ग, बट जब मैं रेगुलर बेसिस में जो मेरा प्रोटीन इंटेक रहता है मेरा, फिर प्रोटीन इंटेक इन द सेंस मीट से, फिश से, तो आई फील लाइक मेरा बॉडी में मेरे को पेन बहुत कम रहता है, 1-2 दिन के अंदर रिकवरी हो जाती है। मेरे को पर्सनली ऐसा फील हुआ। अब ये चीज़ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ और रीज़न भी हो सकता है, बट अब ये पर्सनली मेरे को चेक करना था कि क्या डिफरेंस आता है। दिन कब से जा रहा हूँ भाई, रेगुलर जा रहा हूँ यार, ये मैं बताने वाली चीज़ स्टोरी नहीं डालता मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डालूंगा। बाल लंबे रखो, इट्स, अरे बाल लंबे करूँगा ना भाई, अभी करूँगा, चिल मारो। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट समझाओ। आज देखो यार, फॉर्मेट के लिए तो भाई देखो, आज हम लोग का रेवेनेंट वर्सेस टू रिपर्स हमारे सामने दिख रहा है। इसको मैं कैसे रखूँ, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, उनको दिख जाएगा चीज़ें। आज रेवेनेंट वर्सेस टू रिपर्स है, और उसके बाद है हम लोग का गॉडसन वर्सेस मार्कोस। स्टोमक फैट कम, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये पक्का तो 15 साल या 17 साल का बच्चा होगा, तो लगता है स्टोमक फैट कम करो, थोड़ा बड़े हो जाओ, वर्कआउट करो, समझ आएगा। कुछ एक पर्टिकुलर जगह का फैट कम नहीं होता है, पक्का छोटा बच्चा कोई। और वीसी आओगे खेलने, खेलेंगे जरूर खेलेंगे क्यों मैम। टॉप 2 स्लॉट मिलेगा, यस टॉप 2 स्लॉट को मिलेगा मोस्टली। ये वही लड़के होते पता है। अरे जिम ट्रेनर मुझे बताओ, मेरे को है ना 4 दिन में मेरी शादी आ रही है, नहीं क्या, मेरे फूफा के लड़के की शादी है, मैं हफ्ते में 10 किलो कम हो जाएगा। जिम ट्रेनर बोलेगा हाँ हो जाएगा, ट्रेनर पर पीटी ले लो और तुम दे दोगे 15,000 और हो गया। पैसा क्या, तुम्हें बोल देगा भाई ये करो, भाई हाँ तुम ये वर्कआउट करो, ये साइड वाइड मारो, तुम्हारा साइड कम हो जाएंगे, सिर्फ तुम्हारा यहीं का फैट जाएगा, तुम्हारा हाथ का फैट कम होना, हाँ डंबल मारो, तुम्हारा यहीं से फैट चल जाएगा। तुम वो लड़के हो जिनका कटता है। स्कारफेस तुम भाई मेंबर क्यों स्पैम कर रहे हो सब चीज़ यार, नहीं होता पॉसिबल चीज़, तुम समझो। सोल सिटी खेलोगे, गेस खेलेंगे ना। पोकेमॉन यूनाइट में कॉम्पिटिटिव कब, मैं क्यों कॉम्पी खेलूँ, आई एम अ सीसी, मैं गेमर हूँ, कॉम्पी नहीं हूँ, इसमें कॉम्पिटिटर नहीं हूँ। 10 दिन में बॉडी आधा सही है। हिडन एजेंडा ये क्या है, क्या तुमने कल से स्पैम कर रखे को देखने दो मेरे को। ये क्या है, ये क्या गया, अरे यार स्टोरी गेम्स के लिए अलग है रे, PS4 की है, 5 साल पुरानी,
सीसी मींस कॉन्फिडेंस है, क्राउड कंट्रोल नहीं भाई मोबा वाले। हाँ हाँ वो ना आदित्य शर्मा ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अरे वो डिपेंड करता है, अरे डिपेंड करता है। आईजीएन में अपकमिंग पीसी गेम्स ट्रेलर देखो, देखेंगे देखेंगे। क्या क्या प्रेडिक्शन क्या क्या सच पहला मैच का ट्रू रिपर्स वर्सेस रेवेनेंट। आई फील इट्स गोना बी 2-1। चलो We are going to go towards the ban phase, and in a matter of seconds, Lucifer, we will be having the Pokémon which are banned from each other. वाई तो जॉइन अच्छा हाँ। I think generally I have no clue, I have no clue. nowadays we are seeing it's kind of अब हार्डकोर गेमर एयरपोर्ट पे भी खेलता। अरे नहीं यार स्क्रीम चल रहा था। capability heal coming, and then there is either the all-rounder or a speedster ban coming through. So it Couch chat पे content मिलता है, ठीक है also भाई। here in the mix, maybe a ranged attacker can also be banned from Revenant to throw a stone to make sure that they have a tough situation. But it looks सी like किसी होता है क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। taking on a defender. Snorlax is out. There's no choice of picking that, but True Reapers on the other end. वाह वो ना मुक्का वाले को हटाया ना भाई, वो बहुत इरिटेटिंग होता है। Actually, some good bans would be coming up here, as Urshifu is banned from the side of from the side of True Rippers, and Revenant would be Defender banned और from attacker? some Pokemon picks coming In up what? from the side of True Rippers. We किस do में? have one Eldegoss and then a Doduo coming from the side of Neo. They understand Speedster is open for the choice. Let's immediately pick it up. But on the other end, to go and pack in heavy punches, I'm not too sure Blizzard will do Decisive. Hey. Decisive will look towards that. But on next, it's going to be a healer in case not an Eldegoss. It's going to be another that. Then we see a defender that they're like a choice that we want to play with. You're going with slow where they want to slow literally the players of True Reapers. We'll look into it. But हाय Cloud हाय साउंड। is going to be troublesome for मैं सोचा था कि इसका थोड़ा गाना लगा दूं, to top it. सीधा पंजाबी प्लेलिस्ट आ जाता मेरे से, पता है इतना पंजाबी सॉन्ग सुन लिया। वहाँ क्या देख रहे हो, चैट देखो, चिल चिल चिल। जॉनी का स्ट्रीम देख रहे हैं भाई, बोया नवीन क्या दिमाग में क्या है भाई को हंसी सी आ जाती होता है लॉन्डो पे। Cheetah, हाँ भाई dogs. मैं डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट भी स्ट्रीम लगा रहा हूँ You know Lucifer, what he भाई। wants to लड़के do यार for बड़े हो India. जाओ, अब बड़े हो जाओ Let's यार talk about the Asia कसम से यार, मतलब Championship for Daksh. कभी कभी हंसी भी आती है, मतलब गुस्सा क्या ही करेगा आदमी। Intrigued right now of what अजीब will लोग happen. यार ना You बे। mentioned about punches. There's ego on none other than Zarina. The Yeah. queen. आ right? जाओ। As well as ब्लीसी her kicks coming ओ through, not easily, as that लेट्स सी she has some heavy buckled यू up. डेली शेड्यूल। उठो गेम खेलो, सो जाओ। Making use of the चलो। slowing the players down and immediately jumping on top of them. अब तो हंसी आती है ना, अब तो हंसी आती है। मर्सी को बुलाओ, मर्सी नहीं, अरे यार कमेंट्री में तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, थोड़ा हम लोग क्या करें। Match here between Revenant वेबकैम साइड कर रहा हूँ। on the third. Let's see who bags this best. सही है, ये परफेक्ट स्पॉट। Yes, to begin with some farming already started from the side of Team Revenant. We have our eyes on them, and as soon as they, buckle up with the evolutions, that would be छोटा really करूँ? good for them, because if they have evoluted first in the very first 3 minutes, then they would be having their eyes on the Regis. Yeah. कर दे छोटा लो। Starting 3 minutes is going to be very crucial in terms of kind of incline. भाई तो मतलब म्याओ से बड़ा बेटी है, पता है। The initial control of this battle. But I feel like irrespective of what happens, as you mentioned, the 3 minutes when you see when the Regis form on the top and the bottom, the bosses show up, games do take a turn. For now, Map पर still गो। True Reapers looking in control, but we've known Revenant for their heavy bashes. So I'm looking forward to when मैं तो म्याओ बोलता हूँ उसको यार। Reapers needs to start getting pushed back. कहाँ रखूँ Already मैप पे, happened. वहीं रहने Starts देता off हूँ। with Blizzard. Nova hits them back. Thankfully that their goal zone is nearby. They immediately go back, not hit their Pokemon stream. साउंड बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा A रहा हूँ। lot of damage being done from the side of Revenant, I must Bah. say. A lot of HP मुर्गी है। lost on the side of True Rippers, but no! Oh. Actually, it would be a Lucario कैसे chaos मरा? streak coming up. And now Mew है, the Mew, मैं Lucario Meow उसको will बोल देता also था, go Mew। down. A good chaos streak from the side of Zarina, I must say. पोल लगा Then रहा हूँ। Jisoo already available
with the slow bro. OMG, the damage on Eldegoss is going to be a lot. And yes, Steph with the Eldegoss is gonna go down. Knocked out, sent back to the base. Would be back in the battle in no time. Devish is also in a tough position. He has a berry to immediately. Prediction boys, prediction time. But Let's in go. the meantime, there's Crowley that he needs to be worried about, and understanding that as soon as he sees Kyo, they're backing up. मैं इसको मुर्गी बोलता हूँ It's not a भाई fight बहुत that we irritating want to डरा win, डरा especially के with तो मैं another मुर्गी third बोलता हूँ बहुत Pokemon irritating है वो. again. Two Rippers have bottom lane control, but in the meantime, Revenant are pushing up on the top lane, and I'm still looking forward to if there is finally a knockout that we end up seeing, and looks like they are intending towards it. They want to send these Pokemons back, but Kyo is here. But finally, it looks like one Pokemon was taken down, but in भाई यार turn, अलग Kyo एग्रो also खेल रही है. exchanges, and he is also sending a player back to their base. Well, yes, Bro, यार क्या exactly. एग्रो खेल रही Well, है. make it two. You are not going to, stop the chaos streak coming up from the side of two Rippers. And it was just, वो टीयर is actually super aggressive. like a wait time of 5 or 10 seconds, and look at that. I was going to talk about how Revenant has still maintained the scoreline, but then there comes two Rippers, and now they are on 82 against 55 from Revenant. True Rippers, their main, I would say, advantage is players unable to separate them, isolate them. And भाई it was टीयर क्या taking the ये एग्रो खेल advantage. रही है ब्रो. 19 should have been the first knockout, but it was not the Exactly. case. It was the second R&D knockout का that attack Revenant got it. Revenant somehow, they're able to get back in the game as they're taking top lane control, deliver a knockout, sent another player back, especially a very crucial one. The Queen is being sent back. But Dux is still causing problems on the pillar spine. Swifty being a Blissey can take up damage, so therefore will survive, but the goal zone is destroyed. Something to be worried about, and therefore, because of the goal zone destroyed, another knockout, and immediately on top of the knockout, Reggie Elkichus just spawned, immediately taken up, and taken the attack advantage for themselves. The boost for now, and you can see they're targeting the bottom's goal zone, which will soon be destroyed. Kyo extend a little bit too much. He had 40 AOs and अपना निकल जाता भाई. because of his speed, will be able to run away. And Revenant, in the meantime, as one person runs away, they deliver two knockouts and send Hey, two the feature Pokemon है. back to the base. Well, yes, exactly, and with Neutral that, is the I must say closure. that as soon as they got the Registeel on the bottom lane, not waiting for even a single second, two Rippers capitalized on that, Lucifer. Moving forward, 34, 30 50 चल रहा है fight यार. would be adding to the scoreline from the side of Slowbro. But Swifty, indeed, at the top lane was struggling really hard against the Pillar Swine. Now the Mammoth Swine, Daksh is also available Oh, Daksh player बढ़िया है waiting भाई. on the top lane for the players to arrive. Well, then some farming being done from the side of these players. as Squishy Nova tanks है, ऐसे also term को is explain कर amongst लो, okay. them. 150 ना स्क्विशी मतलब क्या होता है ना जिसका हेल्थ बहुत कम रहता है और वो तुरंत मर सकता है उसको स्क्विशी कैरेक्टर बोलते हैं बट नॉर्मली स्क्विशी कैरेक्टर का डैमेज बहुत ज़्यादा रहता है Two Rippers, और टैंक जो होता है इनका हेल्थ बहुत रहता है जो डैमेज लेते हैं नॉर्मली टैंक का काम है डैमेज लेना और स्क्विशी कैरेक्टर का काम है डैमेज देना. Now it's Revenant trying तो आपको टीआर डॉडरी दिख रही है जो मुर्गी टाइप की चीज़ ये डॉडरी है इस पोकेमॉन में डॉडरी है he's the main leader right now. ये Definitely, बहुत डैमेज देता है स्पीड है बहुत इसका बट ये बहुत स्क्विशी है जल्दी मर सकता है. but players defeat is the right time, and now Revenant have fallen in a disaster, and therefore you can see one and the other player might get knocked out. But Scyther is here to save that. He delivers one, but Ninetales exchanges another, eliminates the Scyther itself. But Crowley, he's there. He's going to be using his range attack, making sure another player is good. Immediate exchange coming in. True Rippers want to regain control along with Serena. अब ऐसे वैसा नहीं है रे delivering a मैक्सिमम 2 KOs यू नीड टू lead. अंडरस्टैंड बहुत लोग And ऐसे हैं. therefore Revenant, who thought आप उनमें से नहीं हो, बहुत लोग हैं वैसे. Snorlax से इधर वो क्या है? बैन है. उन्होंने बैन किया है. ओके. तो आपको जो लग रहा है तो दोनों टीम को चांस मिलता है एक पोकेमॉन बैन करने का. तो उनको अगर लगता है कि स्नोलैक्स उनके टीम के बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उन्होंने स्नोलैक्स बैन कर दिए और उर्सी को तो भाई ऑलरेडी बहुत ब्रोकन है तो उसको उन लोगों ने बैन कर रखा है. did not happen here, brothers. Well, yes, यार तो लगी exactly. खेल रही Look है. at that. Even after getting two Reggies back to back, not able to get a lot of difference in the TR is scoreline. today And playing with that, insane. Mew would be actually adding more तो and TR more ego जो है to the ना, side of Revenant. Meanwhile, when you इसका talk health steal about बहुत the है. Unite moves, not yet ये मैमसन जो है ये टैंक है और जो अंडा आपको दिख रहा था वो हीलर है सपोर्ट प्लेयर है. a lot of difference to the score, and because then देखो इसको one मारने में side बहुत is टाइम लगता too है. dominant on the other one, but that doesn't happen when you have a team like Revenant or two Rippers. Whereas Lucario goes for another KO on Zarina this time, and they come. अब पता है इधर क्या हुआ देखो अब इधर टैंक ने अपने ऊपर इतना डैमेज दिया टाइम मिल गया सामने वाली टीम को निकलने का फॉल बैक करने का. ब्रोकन इवर उर्सी को सिक्योर हाँ सिक्योर बहुत स्ट्रांग है बहुत जल्दी सिक्योर कर लेता है. कट टू कट सील करता है वो. 40 now.
True Rippers is once again leading the charge. Still, Revenant are looking forward to coming closer and closer, but in the meantime, they jumped upon Reggie, where True Rip was already steady, looking forward to fighting it out, and they're making sure it looks very highly impossible. Crowley uses his Unite, but it doesn't find any value. Daksh is playing brilliantly on the Mammoth Vine. He is, yes, taking damage, but his teammates are very close by, therefore, he's getting healed up, pumped, ready for the next upcoming action, and right now, pushed all the players of Revenant back. You can see they are fighting with Reggie, making sure again in the top lane, they get another ally, make it from a 5v5 to a 6v5. I know it might be an AI or a computer, but still, it's an ally added upon where True Rippers can change the game, push to the bottom. अब पता है थोड़ी देर बाद है ना वो बीच में एक आएगा मैं तो जैप्टो से बोलता हूँ उसको बस का रखे जाए उस पे प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ मैं आप उसको मार देते हो ना तो आपको एक शील्ड मिल जाता है और डबल स्कोर होता है मोस्टली तो वो जो स्टील करता है वो टीम ऑटोमेटिकली गेम पलटी कर देता है अभी देखो पूरा फाइट बराबर का चल रहा है 20 गोल का डिफरेंस है Pokemon battled it out. They knew they had क्या to होगा battle it out at no cost. Another Reggie going in the favor of True Rippers. No cost. Another Reggie going in the favor of True Rippers. The scoreline keeps on increasing as Dodrio would be adding more. ये मेरे को सबसे इरिटेटिंग लगता है डॉडरियो Well, look खेलना at बहुत that. टफ है बढ़िया Yes, it is going to be Revenant trying to search अब out देखो, for अभी- the goalpost now. अब ये स्टील पे गेम है पूरा At the mid lane where most of the fight goes on at the mid lane. Yes, the last 2 minutes arrive as soon as possible. Is available. अब जो जिस टीम ने ये ग्रीन वाला पोकेमॉन को मार दिया वो टीम जीत गई ये लेके चलो ये होने वाला अब lane and no idea here for True Rippers. As soon as Zishal and the players start popping सब out, bait now कर they're रहे हैं किसी worried. को, पता है? True Rippers understand that they're covered from all directions, but what is Theo doing? He's waiting at the base, wondering if any आरएनडी को मारना पड़ेगा क्योंकि आरएनडी ये चल रही है ट्रेल कर रही है going to be a double, and that's the reason. रखिए हाँ मैं इसको जैप्टो बोलने का आदत है In the meantime, True Rippers understanding they have the advantage in the lead here and can close the game. They're not at all initiating any kind of a battle with Rayquaza. All they're doing देखो ये आगे अपना अलग से करने का स्कोर getting close. डॉडरियो ने पकड़ लिया ये मर जाएगा Theo wanted, and with his quick attacks coming through, push Nova towards his. ये टीम फाइट अभी टीम फाइट जो जीता उसका गेम है अभी Damage, guys but oh no, Ninetales is out. This might be a big one, and Crowley comes out with the Unite. This can also do damage. Along with that surf, you can see both Ducks and Ego were hit. In the meantime, Unite comes out with Ducks, making sure he troubles the player. ओ भाई TR crazy Scyther, and along with that, the Lucario goes down. Revenant are losing players. 50 unable to kill any. TR क्या खेल रही है bro Are out. Well, yes, exactly. Sent back to the base. 2 of the Pokemon. Oh. They have a lot of, time available with them. Being the time 30 seconds है वो। from the side of True Rippers. More 30 seconds remaining. They don't have the. ये मरा म्यू गया And look at that, डॉडरियो मार they देगा have a lead. It is going to be Revenant in a harsh battle out there. The Mew faces a lot of damage. Gets KO'd from Eldegoss. 22 point added. पता क्या हुआ TR देखो ऊपर स्कोर कर दी This might be a blessed in disguise, but no, 10 added by the side of Dodrio. 10 more seconds remaining. 10 more added. It's हार गए 247. निकल गए Not हार much गए of a difference. It can't be covered up. Any single. It can't be covered. 5, 4, 3, It can't be 2, covered. Practically 1. No, True Rippers' ego being denied. They still have. भाई it can't be covered to be honest वहाँ तुम्हें थोड़ी गोल करने को देगा बिना इसके भाई डिफेंड तो हो ही जाना है टीआर खेली भाई क्रेजी मर्सी ने मेरे को एक चीज़ बताया था कि टीआर एक ऐसी टीम है वो कभी भी किसी को भी हरा सकती है और कभी भी किससे भी हार सकती है ऐसा सीन है टीआर क्रेजी खेली टीआर स्टार्टिंग से एग्रो दिया ना ब्रो चुम्मी खेली बेसिकली टीआर इज आरसीबी हां यू कैन से दैट मेरे को क्रिकेट के बारे में इतना पता नहीं पर लोग बोलते हैं कि आरसीबी की बेस्ट टीम है पर वो जीत नहीं पाती है Correct. You saw if Crowley would have got a chance to score with 36 or 46 that he had, he would have. अभी सेमी में हराया था टीआर को ऐसे खेलने And you could see True Rippers who wanted to sneak. भाई मैं 2-1 स्कोर कर रहा हूँ बोल रहा हूँ Let's Let's see. see. As well. Players denied. Revenant were ready and steady for it. It did not work out here in game 1, but again, this has happened to True Rippers. Now they have to close the game. Previously, when they won game 1, immediately it was a comeback that we ended up seeing from Marcos, and True Rippers lost.
Now True Reapers have another chance to close it out and get their second. कॉल मर्सी नहीं पता, फोन नहीं उठाया यार. But it's something to watch out for. But I would say some I think Mercy is credit needs to busy be given right to now. Kyo as well, because he was available in every lane whenever the team needed him. Well, yes, the first two games would actually be taking victory. SL12 in this best CSK of फाइनल three. में Again, a great matchup SL12 here. CSK फाइनल में True जाए पर Reapers और हार performed जाती है. लॉल. amazing, as I say. They had the Regis क्या लगता है and तो कौन जीतेगा? worked out with it, but Personally, what I feel, RNT is a bit more consistent. देखते हैं अगला मैच, हर चीज़ डिपेंड करने वाला है अगले मैच पे. अगर RNT TR को ऐसा पुश करने ना दे तो RNT जीत जाए. अच्छा मैं कोई टेक्निक, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट देन ऑल्सो, बट अंडरडॉग फक द वर्ल्ड बॉयज. आई फील TR शुड विन. दिल से TR, दिमाग से RNT. लेट्स सी. दिल से एसिडल है नहीं आज. TR जाएगी मेरे को लगता है 2-0, 2-1 में बोलता हूँ. RNT कर लेगी. 2-1 बोलता हूँ. दिमाग बोल रहा है 2-1 हो जाएगा, दिल बोल रहा है 2-0 हो जाएगा. बताओ क्या होना है? 2-1 हो जाएगा. RNT 2 TR 1 दिमाग बोलता है, वो दिल बोलता है कि भाई नहीं TR निकाल देगी 2-0. गेंगार इज बेस्ट पोकेमॉन. यार यू कांट से दैट, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके प्ले स्टाइल पे क्या है. नॉट वेट विल गेट स्मोक्ड. 2-1 होगा ना. मेरे को 2-1 लग रहा है. 2-1 TR RNT. ये से नहीं 2-1 RNT TR होगी आई फील. आपके घर आया हो सकता तो मिलना ब्रो. FM लोगन भैया, आप मेरे को कैसे पता चलेगा आप मेरे घर आए हो, आप कौन हो, समझ रहे हो? मेरे को नहीं पता चलेगा. देखो ना, स्टार्टिंग से पूरा एग्रो खेली है. स्टार्टिंग से फुल एग्रो खेली, फुल एग्रो. चलो यहाँ पे आई थिंक सही है. खाली बैंड टाइम अपने को सेंटर लेना पड़ेगा कैमरा. स्कॉट भाई और कुछ खेलोगे? रात को खेलेंगे, रात को खेलेंगे. स्कॉट भाई और सब क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है यार. बीइंग एसएडएल फैन यू हैव टू एग्री दैट आरएनटी प्लेइंग टू. हाँ, पिछले जो मैंने वॉच पार्टी करी थी उसमें मेरे को लगा भाई आरएनटी इज ओवर पावर्ड. And is generally overpowered. सुबह एसएडएल से आरएनटी का मैच था. एसएडएल एक फर्स्ट राउंड विन, फिर आरएनटी 3 राउंड स्ट्रेट विन. ओह, लुक आउट यार, 7 टाइम आफ्टर दैट इट्स ओपी. गेम में स्क्विशी एंड टैंक्स टाइप पोकेमॉन होते हैं या और भी कोई टाइप के होते हैं? यार स्क्विशी और क्या, ये टाइप नहीं है यार, ये बहुत बेसिक चीज़ है. कोई भी स्क्विशी बोलते हैं इसका कम हेल्थ होता है, टैंक होता है जिसका ज़्यादा हेल्थ होता है. सिंपल कॉन्सेप्ट. और एक होता है जो ऑलराउंडर रहता है, इनको बेसिक रहता है, मॉडरेट हेल्थ रहता है, डैमेज भी उतना नहीं देता है. डिपेंड करता है. इज मोबा ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन? मोबा इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी. मोबा इज ऑल अबाउट. आई एम लुकिंग टायर्ड. यस आई नो, आई एम लुकिंग टायर्ड. मेरे को थोड़ा सोना है इसके बाद. मैं कल से बहुत कम सोया, कल रात से मुश्किल से. आई थिंक सो. आई जस्ट स्लेप्ट लाइक 4 hours या 3 hours बस. By the way, do you also obsessed with Pokemon cards? No, Bhavesh, no, I'm not. ऑलराउंडर में साइथर अटैकर का बार बार है मतलब मैं रात को स्ट्रीम होगी ना रात को करना स्ट्रीम. मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया हूँ. ऑलरेडी आज पीपल इन द ग्रुप कि स्ट्रीम करते हैं, क्या खेलना है एंड ऑल. मोस्टली हम लोग आज रोलर चैम्पियंस खेलने वाले रात को.
आप भी शूट करेगा एसएल के देसी टाइम में? नहीं, मेरा नहीं था यार. But last Vitation was legit nasha. Yeah, the squad was also too good. What about Absol in Compy? मोटल खेलेगा रोल चैंपियन. देखो यार, मोटल ने तो बोला व्हाट टाइम. अब लेट्स सी वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा. मैं और स्नैक्स तो खेलने वाले. मैं और स्नैक्स तो हम 2 है. आई होप सो जोकर भी आएगा एंड 6 लोग हो जाएंगे तो हम लोग खेल पाएंगे रोल चैंपियन और काफ़ी फन रहेगा. But what would you choose if you had to decide defend role or attacker role? Oh, obviously I will go for attack, bro. Obviously I will go for attack. मैं नॉर्मली मोबाइल गेम्स में मेज खेलता हूँ जो ज़्यादा क्राउड कंट्रोल का राउंड खेलते हैं. क्राउड कंट्रोल डैमेज रहता है. मेरा वो समझ, जैसे कि अपने इसमें ले लो, क्या उसका नाम है यार, दिमाग से निकल गया यार. अरे अपने पोकेमॉन में एक ही तो मेज है. 2 मेज है, सॉरी. गार्डियर एक है, एक और उसका नाम क्या है? डेलफॉक्स. बट किस गेम पर व्यूज आ रहा है वाईटी पर? वाईटी पर आई थिंक अभी पूरे वर्ल्ड में भी देखा जाए ना तो व्यूज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डिसेस, टीम द टैटमैन और वैल्कैरी को आती है बस. इन टर्म्स ऑफ गेम्स, प्रॉपर गेम्स में ये तीनों को ही आती है पूरे यूट्यूब पे. वो भी उनके अलग ऑडियंस है यार. वो अलग इट गॉट बिल्ड ओवर द टाइम. जैसे अपना भी कोई भी गेम खेलते हो कैसा 3-4 हज़ार तक जाती है राइट वॉचिंग. और कुछ अच्छा गेम हो तो 5-6 हज़ार जाती है. कुछ एकदम क्लाइमैक्स वाला सीन आता तो 10 हज़ार पहुँचती है, जैसे गॉड ऑफ वॉर पहुँची थी. तो उन लोगों को वो चीज़ 10 साल में बनी है. डॉक्टर इसमें को 10 साल 8-9 साल में बनी है राइट. सेम. Tried it here as well. He was heavy hitting and it worked. सीधा डॉटर बैन कर दिया. 20% डॉटर बैन का. ओके या दो ऑडियंस आर मेड आफ्टर. तो मतलब समझ रहे हो, अपने को भी आज से 4 साल बाद तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे. अगर तब तक तुम स्टिक करते हो मेरे साथ तो अपना कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा. समझ रहे हो ना. जैसे रोनाल्डो को मैं लाइफ टाइम देख सकता हूँ नो मैटर वॉट. अगर वो अच्छा है ख़राब है चलता है, मेरे को नहीं मैटर करता है. तो वैसा वो एक कनेक्शन होता है. वो कनेक्शन बिल्ड होता है ओवर द टाइम. आरएनडी टीआर का फुल फॉर्म क्या मेरे भैया? ट्रू रिपर रेवेनेंट है. और क्या नाम हो गया? और क्या नाम होगा बताओ? और क्या नाम हो सकता है भाई? मेरे को एक जेन्युइनली बात बताओ. चलो सर ट्राई वंस पोकेमॉन स्कारलेट एंड गोल्ड. हमारा भी आपका साथ जमा रहेगा. अरे धीरे धीरे हो जाएगा यार, कोई स्ट्रेस नहीं है. स्कार भाई आप डॉटर खेलो, आप सबको बुली कर सकते हो. इट्स गोना बी फन. डॉटर बाई करके सीखना पड़ेगा ऑनेस्टली टेलिंग. ओहो एब्सोल, जैसा आपने बोला एब्सोल कॉम्पी में यूज क्यों नहीं होता. एंड दैट्स माय फेवरेट पोकेमॉन इन द गेम. Absol is here. Let's see some Absol magic. This kind of lineup that they have had, and moving forward with all these Pokemons, let's begin with the second game where True Rippers already have a lead against Revenant. Absol can melt tanks. Absol काम ही नहीं. Absol को काम ही नहीं टैंक को मारना. Absol को काम है डैमेज डीलर्स को मारना. Absol चढ़ जाएगा म्यू पे, म्यू इज डेड. Absol चढ़ जाएगा इस पे क्या मारते हैं ड्रैगफॉल पे, इज डेड. वही एब्सोल का काम टैंक को मारना होता ही नहीं है. Let's see. ये देखना, ये इंटरेस्टिंग है. माय पोकेमॉन इज हियर. True Rippers, are they going to be commanding from the start? Are they the ones who will be having the reins in control is something that we have to see. If you want to talk about the mid laners right now, as you can see, it's going to be हर मोबा में टैंक क्या खेलते हैं. Also with Devesh on the Mew, but alone. Let's see Absol. It's going to be Absol taking control of. Come on Andy, come back. On Revenant end, he wants to Show some insane comeback. True Rippers for some extent as Nova levels up and is ready for the next upcoming match. Well, it's ये more ईगो ने about क्या लिया? farming ईगो ने वो लिया what's ना, क्या being बोलते done हैं? in the very start, and as True Rippers will begin with the score line, Revenant would be focusing वो ले more dinosaur लिया क्या? on the नहीं, नहीं. damage dealt. Look at them, they're just going aggressive for now, maintaining
both the sides. And when you talk about the damage, it's a lot, okay? So the Bulbasaur will actually take मैं तो करूँगा भाई, time and पूरी go ताकत back, लगा के, चिंग मारो। to the lanes, go back to its base, whereas Snorlax begins the scoreline by Snorlax adding बहुत 7 mindfuck है। chaos energy to the goal. Snorlax is one of the most Early mindfuck goals characters in is the game. something that I do not worry about. नहीं मार but सकते, I'm looking वो तो धक्का देता है ना, तुम कुछ कर ही नहीं पाते। Yeah. Shifu will evolve. And I'm ये देखो looking ना। forward to- He's gone in for a very aggressive attack. एब्सल आया, एब्सल मारेगा। How it functions. In the meantime, Revenant, they're looking for to taking complete bottom lane control, but Crowley अरे is बेचारा super गया। low. Electro ball coming in from Devesh hurts him, sends him back to the base, but nonetheless it doesn't, I would say, give up the Absol bottom lane मरेगा। control completely because Absol मर Devesh गया। is still there. Zishal will try to Oh, provide control. Oh. Pokemon's coming in with the Oh, Dragon Dragon Bolt Trying क्या to मारा force है? the players of Revenant to give away the bottom lane control, but Crowley, he's back in. But in the meantime, top lane is also where Revenant are losing control, whether it's top or bottom. It's going back and forth, and it is not looking favorable for right now Revenant. Wait for it. True Rippers going till the very 100th scoreline. Now that they have 95 points But in TR their is just- chunk. Lucifer, it's been more than around 2.5 minutes. Look at this battle between Swifty going against the Urshifu. And there comes a great, ally. There is going to be Absol actually taking down Urshifu and bringing him back to the ये यार बेचारा गया। Super crucial if no assistance was provided, Swifty could have been knocked out. But then, what do Solo show mode they game। say? They're like, oh, 2 दिन का ये गेम player was already लॉन्च होने वाले, वो so खेलेंगे। aggressive. We are going to be making sure that the little amount of control that you thought you got in the top lane will be immediately denied. Right now, Revenant, their intention is not the bottom Reggie. They want to fight on the top, get the Reggie Aliki for themselves, add an ally for themselves, making sure that Revenant have a tough time. And True Rippers are trying to do that. They've already taken control, but Revenant, who saw there are many number of players, immediately भाई कैसे बस बढ़िया bro। they're like, okay, with a couple of seconds left, we'll jump, and Reggie is immediately here, but Ego has already started the battle. Safe is already here. True Rippers are the ones who have started things off, but looking at the amount of players that Revenant brought into the bottom lane, True Rippers are giving them space. Indeed, the space that Revenant needs right now, well, working really hard. This is my favorite Although Absol skin, True नहीं होता है। Rippers, were present in the very first game. Revenant has got that strategy. Now, taking the Regiais in their एब्सल देखो ना, मेल्ट कर रहा है सीधा सीधा। more special ओह, ये क्या डैमेज है? would be awarded to them, and moving forward they took a lot of damage going back towards their goal post, trying to save it. True Rippers will be dealing a lot of damage, and bottom lane, a great defense came up from the side of True Rippers. Crowley was clinching his teeth over there to survive. ये किसने क्या डैमेज है guys? Looks like it's going to be a 2v1 situation. Ego is stuck. Thankfully, his Blissey is there, going to be saying the day, what, the scalding hot. I would say water gun coming through from Slowbro hurts him, but he is one Pokemon can take up a lot in terms of damage and also has blue health. Taking complete advantage Bhai, of that is going RNT to be tough, number not for long advantage because खेल the दी है Dragon अभी। Bolt is out, and now he is in a vulnerable situation, in a 3v1 situation, and another knockout comes through. 9 tails that is Crowley is playing. He's मैं like, तो हेवी गोल right होगा। at the edge of RNT का जो गोल होगा but बहुत I'm हेवी back गोल into the होगा। game with my team healing me up, and you are the ones, True Rippers, your Pokemons are the ones who will be fainting one after another, and look at this tussle. It looks वो like देखो ना, Revenant Snorlax तो are देखो ना, somehow क्या capable of things, mindfuck but है, both सोचो ना। sides tells you the other. They're Yeah, still it- unable to score. It is a build-up that we are looking for, Lucifer. I am going to see it. Dragon Ball, yes, he would be taking some knockouts. मैं but बोल रहा हूँ ना, it अभी is score होगा, built बहुत up for heavy the score last होगा। minutes. Revenant know what they are doing. Venusaur going बहुत हेवी स्कोर, बोल देखो सीधा हेवी स्कोर होगा, बड़ा स्कोर होगा down सीधा। two Pokemons and sending them back to the base. New Whereas surf का one damage होगा। Pokemon to the side of Revenant also fails. Yes, would be back into the battle. 9 tails coming back to the battle as soon as possible. Whereas the top lane is empty. It's a great control from the side of Revenant on the bottom Revenant lane. बहुत And look at the बढ़िया खेल scoreline. रही है। Closing down back to back. It's now 167 to only 115. कुछ from समझ नहीं आ रहा, Revenant. पूछो It क्या is समझ नहीं आ just रहा है। a 50-point difference, and at any given second that would be covered up. Look at the. ये देखो ना, ये Snorlax बहुत Revenant mindfuck has a वाला perfect ability है ना, ball धक्का against देता है the वो। Blue Rippers, disallowing them to go in the bottom lane.
even though the battle was great coming in from Revenant, it did not work out. Unite being used, so much damage. It looks like Crowley might just be out, but before that, the slow bro. भाई देखो स्नोलैक्स माइंड एमएफ वो उसको धक्का दे के लेके अंदर भाई. All going down a 2 KO streak before Blizzard goes on. He's trying to eliminate another one, and yes, says him. Urshifu is out and quickly taking the Regiais. Again is going to be Revenant. But look at this. अभी मोटा लेट जाएगा. Seeing coming in from Revenant, they're able to get these boss Pokemon. They're able to get knockouts and sending True Reaper's Pokemons back. But what is happening is that they're not getting chance to score. That's how True Reapers are maintaining control. 214 is हाँ but एक चीज है. and that is from Revenant the top lane push मार तो रही है, making. but Right score now, नहीं कर they're पा रही है. understanding that the bottom lane fight is not at all working. They shift gas immediately to the मेरे को top lane लगता and है. finally fight with Reggie LK and Revenant. मेरे को Getting लगता है their हो रहा है in their actually. favor will be finally able to destroy another goal zone on the top, and with that they'll be eyeing their Revenant goals मार on तो the रही है, bottom but as score well. नहीं कर पा रही है. Because that is also left with little, but the score line is still not big of a difference. Dux is super low with the petal dance Oh, coming no. in. And whips coming through. There will be another knockout coming through. Revenant, as we उड़ने वाला कौन सा Pokemon है? they're कौन सा heavy बताओ? hitters. They're packing a lot of punches. Their attacks are heavy. But let's see how far that will get them in the score. Well then, you know, harsh situations always require harsh solutions. Revenant working on that. Yes, they had a decision to move towards the top lane, but then the goal post not being available. It's yet too far, and True Reapers are even able to defend the bottom Dragon lane. Ball है नया वाला Pokemon है वो. That won't be successful. Some farming being done. Yes, they need to be available with the unite moves because it's just a ऐसे matter प्रियांश मेरे को of आइडिया नहीं, मेरे को 40 पूछना पड़ेगा. seconds where the Rayquaza would also देखो मैं be सही में हिसाब available. किताब ढूंढता हूँ Then, कितना आता after है. that, this might be the round where True Reapers would face on getting that Rayquaza. Yeah, because they obviously, now Women have Cup a good वाला हो lead, गया. but Revenant can cover up. Starting cover starting it में up funny at के लिए any था, given अभी लोगों ने इसको second. बहुत ज़्यादा Being abuse किया इस चीज़ unstoppable, को. wanting to stop the enemy team. Look at that. Urshifu is just being there for the top lane. No matter what, even if there isn't a single ना, Pokemon to the side of कहीं भी एक चोक होगा ना वो top टीम lane बीटी needs नहीं to be guarded देगी. off. Yeah. Lanes need to be completely guarded from both the teams. Revenant cannot lose a lot more. True Reapers should not give away anything. Rayquaza is going to be here, and before it is there, you saw Revenant took, I would say, one step further. Before the Rayquaza was here, they wanted to initiate the battle, and they did. They did push back the players of True Reapers, but True Reapers was smart. Bhai. They did not give in to the battle, and they're holding their positions as they know they still have the lead. Again, Daksh was able to. पता है Revenant अभी ये हो गया, अब रखो जो डिसाइड रहा, रखो जो ऑब्वियसली डिसाइड रहे. Right now, Blizzard and Zishal pushing together, a big block coming through, but with the blue HP still surviving. Good telekinesis coming through in between, but then there is a unite that we see, which forces the players to back off from True Reapers. भाई वो देखो ना उर्सिफ को देखो ना उछाल दिया हो तो. With heavy punches coming through, but Crowley, he'll be able to eliminate one, and on This top is of what it, I with was the unite talking coming in from about. Absol. Heavy hits coming through. They've knocked out two players. They're looking Absol for Absol third, दौड़ा दिया भाई. and with that, it's only one player left. Absol और ये कौन जीतेगा? Absol. Trying to Absol wins. with the last player surviving. He Bro, was जीत गई. sent back. R&D जीत Everybody जाएगी. sent to their bases. All the Pokemon fated from True Reapers and Revenant. Not even thinking. of अबे getting Absol down. को स्कोर They're करना था like, पता है? start getting the goals Absol scored का and उसके ऊपर take कूदेंगे. the lead to 307. The build up for the last 2 minutes, not wanting to take the Rayquaza was not even required. Lucifer, look at that, adding 100 points to the table. 259 was secured and procured by Zishal, and after that the team goes on with that. Now they just need to buy the time. Slow bro would Fight हो actually गया, be ये हो able to गया, take down रखो जो fight the चालू हो गया. Pokemon as Ninetales वो बहुत इंटेंस आने वाला ये. sent back to the base, but look at the lead that they have got. Revenant. Oh! The Rayquaza might go down, and the Rayquaza goes down by the side of True Reapers. That can be Yeah, a जीत change गई. that they were waiting for. Last Yeah, 15 जीत गई. seconds, and the fate will change for Team Revenant. The Rayquaza went down, and it's True Reapers taking 2 rounds back to back. हो गया टीआर What जीत a गई. history that has been made in this very game of True Reapers and Revenant. It's a 2-0. The last moment it was in the last 30 Insane. seconds. Insane. The fate changed भाई for True Reapers and they भाई have got टीआर ने the क्या खेला है ब्रो. against Team Revenant Esports. 678 to just You don't see Revenant losing normally. Trust me. You don't see Revenant losing. Got out of hand in less than 10 seconds. True Reapers. हाँ, they should have taken gone for the
all in What a their clutch, comes what a up. clutch, insane But clutch. one after another, they started respawning. And what did they do? Immediately, they rushed and gushed towards the legendary pit. That is Rayquaza fight, and they wanted to initiate it. And where things started falling apart was भाई when बहुत Crowley crazy गेम था, बहुत found close गेम था that, पता है. mid lane. And after Crowley, they started putting a lot of pressure on Zshal, and Zshal was super low. Swifty tried to heal them all up, and then Blizzard along with Nova, and things just crumbled. What a way to get back into the game. True Rippers understanding that they have faced this. भाई गलत गेम था भाई इसके. ये अभी तक का बेस्ट गेम था टू बी ऑनेस्ट. ओरिजिनल स्लोब्रो, अरे स्लोब्रो भी है गाइस. पता है मेरे को ट्रिगरिंग कब लगता है पता है, जब स्लोब्रो, म्यू और ब्लास्टर्स रहते हैं एक टीम पे. भाई वो तीनों के पास सर्फिंग एबिलिटी है जो माइंड फक है ब्रो. यू कांट डू शिट, यू जेन्युइनली कांट डू शिट उस पॉइंट पे. सिद्धार्थ, अरे बहुत इजी है रे. दिस लाइक in the entire world, if you want to start MOBA, if you want to learn MOBA, if you want to know what's a MOBA game, Pokemon UNITE is the game. छोटा, शॉर्ट, क्विक, ये गेम का की फीचर समझो. छोटा है, शॉर्ट होता है, क्विक होता है और फटफट होती है चीज़ें. But imagine Daksh didn't even take surf. Siege damage taken. Yeah, exactly, bro. That's my point. That's my point. वैसे को मैं देख लेता हूँ मेरा अकाउंट कौन से रैंक पे है. लेट मी चेक. म्यू देखो अभी किसी बताता हूँ. म्यू का डैमेज बहुत सेक्सी है बट म्यू स्क्विशी है. म्यू के पास पहुँच गया तो खत्म. शॉर्ट एंड क्विक ये सुन के डर्टी लगा. ठीक है भाई, बट अबे यार तुम तो अलग. इतना क्यों है तुम में अंदर भरा हुआ, मुझे बात बताओ. हाँ भाई जनरली मैं बताऊँ, दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग. तो आई फील कि ड्रैगन बॉल भी थोड़ा गेम चेंज था. आई पर्सनली फील कि जब गेम स्टार्ट होता है ना नया नया, कभी कोई भी नया गेम का बेस, उस टाइम पे यू शुड गिव इट अ ट्राई. क्या पता आपको मोबा गेम अच्छा हो. एंड जब ये गेम एक अलग हाइट पे रहेगा देन यू विल हैव योर ओन एम्पायर देयर, जस्ट द वे वी डिड व्हेन पबजी मोबाइल स्टार्टेड बैक देन. अब न्यू कमर्स के लिए बहुत टफ है ब्रो, क्योंकि यू नीड टू बी एक्सट्रीमली गुड, बट योर प्रायोरिटीज चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. सिक्योर डिफ आ गया ये तो. हाँ ना भाई, they made a mistake by not taking Rakuza. Yeah, they really made a mistake by not taking Rakuza. I feel Dragonhead is one of the waste character bro. नहीं मज़ा नहीं आता. सपोर्ट चाहिए बे, किस में चाहिए. ड्रैगन फेल में भी. हाँ ड्रैगन बहुत नीचे गिर गया ना. But I'm downloading the update. Dragon used to be OP with Hyper Beam at release, but not anymore. देखो कृतिका भी है, नमन भी. Oh guys, let's go. We are having some insane stream tonight. आपको बता दे रहा हूँ मैं क्या होने वाला है आज. क्रू नमन, ठीक है. स्नैक स्काउट क्रू नमन 3-4 हो गए. 2 more slots. दो लगे. माम्बा और जोकर को आना चाहिए यार, अगर इन लोग इन करें टाइम पे तो.
गैस पता है मेरे को क्या बताओ गैस, 250 डेडलिफ्ट उठाना इज अ बिग थिंग राइट, बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, मेरे को वहाँ तक पहुँचना है कई बार। आई वांट टू डेडलिफ्ट 250 केजीज। मैं तब मैं बोलूँगा कि हाँ भाई मेरी बॉडी बन गई है जब मैं डेडलिफ्ट 250 मार दूंगा। मैं टारगेट रखा, मैं अभी उससे ऊपर नहीं जाना मेरे को, 250 इज गुड इनफ फॉर मी आई फील। अभी मैं आई थिंक 150 तक मार दूँ, अगर मैं 250 मार दूँ अच्छा है, खुश हूँ मैं। मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक अवेलेबल मेटा, हाँ 250 इज अ बिग थिंग। 250 भाई ठीक है, अभी मैं 150 मार लेता हूँ। 250 मेरे को 250 पहुँचना है कभी। मैं सच बता, मैं 150 मार लेता हूँ, 150 में 12 से 11 रेप मार देता हूँ। 160 करता हूँ ना भाई, वो रेप घप से गिर के 5-6 पे आ जाता है, सीधा गिर जाता है, वो उठती नहीं, वैसा लगता है कि अंदर की अंतड़िया बाहर आ जाएगी उठाते उठाते। साला 5-5 किलो भी इतना हैवी लगता है ना 150 के बाद, इसे लगता है भैंस की आग शरीर में जानी नहीं है। भाई मैं अरे यार कैसे होता है, मैक्स आई डिड 212 1 ईयर अगो। अरे रोल चैम्पियंस टुनाइट गाइस, पता है किसी आदमी को स्ट्रगल करते हुए देखना ना, उसका जो पीआर है तो उससे 5 किलो ऊपर बढ़ा के दे देना उसको डेडलिफ्ट, माँ कसम रोना आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाती है इस पॉइंट पे। ये क्या हुआ को एक सेकंड बस, न न न न न न न आज को वाईटी पे आज होना रोलर चैंपियंस एंड देन वी आर गोना प्ले सम 5v5 बट नॉट वी समथिंग एल्स विद द बीजीएमआई बॉयज। मैंने कल 275 मारा भाई, आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ। वेट लिफ्टिंग इज टफ। मेरे को पता है, मैं अभी जो मीट पे गया था उसके बाद मेरे को समझ आया था कि भाई क्लासिक फिजिक क्या 3 होता है ना, एक होता है बॉडी बिल्डिंग जिसमें यू कैन बी द मैक्सिमम, एक होता है मेंस क्लासिक जिसमें आप मतलब वो सुंदर दिखता है, और एक होता है एक और जो होता है जिसमें आप शॉर्ट्स जिसमें लोग शॉर्ट्स पहनते हैं और आपका अपर बॉडी का ही उसमें होता है गेस, वो एक और क्लास रहता है। 3 क्लास होता है ना फिजिक में। मिस्टर ओलंपिक जो होता है वो सबसे बड़ा वाला होता है, मतलब उसमें कितना भी जा सकते हो। उसके अलावा एक रहता है क्लासिक फिजिक जो जिसमें शिवम है, फिर उसके नीचे होता है इसमें शॉर्ट्स पहनते हैं, अब उसका नाम नहीं पता मेरे को क्या है शॉर्ट्स वाले का। रंजीत भाई मैं तो खेलता रहता अपना इसमें क्या बोलते उसको, लोगों पे। एक सेकंड दे दे बाबा। आज वाटी पे कौन सी गेम भाई, एक काम में घूम लेता हूँ उल्टा, घूमने नाम से याद आ गया मेरा गेम खुल गया। हम लोग है कौन से रैंक पे गए पता है, वेटरन 2। ओ रैंक रिसेट हो गया, रैंक रिसेट हो गया, खेल सकते हम लोग, चैट वी कैन प्ले। भाई बोरिंग हो रहा है भाई, मैच तो चालू है, हरावर्धन भाई, हरावर्धन भाई सच बता रहा, हर्षवर्धन था नाम था ना तुम्हारा, हरावर्धन कैसे हो गया ये बताओ, ये बताओ तुम्हारा हरावर्धन कब हो गया नाम हर्षवर्धन से। ऑक्शन में कौन लगेगा, मोस्टली थका है हमारे साथ। हेल्थ ग्रैंडफादर इज रिकवरिंग। हम लोग आप लोग बोलते हैं वो खेलने के लिए, मैं अभी देखता हूँ क्या खेल सकते हैं अपन। एक सेकंड दे दो रे बाबा। डॉड्री आप खेलने बोले थे क्या, डॉड्री तो खोलना पड़ेगा रे भाई, डॉड्री के लिए पैसा नहीं है रे बाबा मेरे पास, नो मनी हनी। रुको रुको एक सेकंड रुको,
आज वाड़ी में कौन सा गेम? अरे भगवान, वॉक्सी भाई को हाइड मार दूंगा मैं, बीटी मत कर। अरे पोकेमोन के ऐसा कोई स्टोरी गेम्स पड़े क्या? 3 मिनट का क्यों गैप है भाई? आदमी क्या करेगा इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे आदमी चैट्स बात करेगा। यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो रखना पड़ेगा नेम। वैसे दुबई आ रहा नहीं भाई, नहीं। हरा देखो, मैं बोला था ना हर्षवर्धन है नाम, हरावर्धन नाम नहीं होता भाई। स्कारलेट वॉलेट है स्टोरी, स्कारलेट एंड वॉलेट है स्टोरी मोड, ओके। बहुत कम से निंटेंडो पे। मेनलैंड पोकेमॉन गेम्स आर स्टोरी मोड, ओके, गॉट इट। What's the aim behind not playing BGMI on YT? Tanix, what's the aim behind? Okay, let me figure out. Let me clear it out to you. ठीक है, BGMI आपका प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर पे है? नहीं, BGMI हम लोग का टेम्परेली बैंड है। इट्स नॉट बैंड होता है सर्वर डाउन होता है, जस्ट टेम्परेली बैंड। इस हिसाब से वीड इज बैंड इन आवर कंट्री, ठीक है ना। लोग उसको करते हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में। कल को कोई एक्शन लेने के लिए एक्शन ले सकता है। सो फॉर मी, मेरी ऑडियंस को मैं एक चीज़ पे रखना नहीं चाहता हूँ। जब बीजीएमआई आएगा पब्लिकली कि यस इट्स अगेन बैक इन प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, तो आप जाके खेल सकते हो, तब मैं खेलूँगा ऑब्वियसली यूट्यूब पे। क्योंकि तब मैं कल को उठ के कोई मेरे को बोलेगा कि स्काउट ये तो गेम अवेलेबल है नहीं, तो कैसे खेल रहा है? मैं बोल सकता हूँ कि नहीं भाई अवेलेबल है, मैं खेल सकता हूँ, कोई बीटी नहीं है, समझ रहे हो। और व्हाट आई फील कि दिस हेल्प्स मी टू इंट्रोड्यूस न्यू गेम्स टू माई ऑडियंस एंड हेल्प्स मी टू हेल्प देम अंडरस्टैंड न्यू गेम्स एंड न्यू जॉनर्स। जैसे कि मैंने पिछले 1 साल में FPS गेम्स, FPS शूटर्स, मल्टीप्लेयर, स्टोरी गेम्स, डिसीजन मेकिंग गेम्स में बहुत ऑडियंस बिल्ड किया है। आई थिंक गॉड ऑफ वॉर में मेरे को लास्ट डे फाइनल चैप्टर पर 10K की वॉचिंग आई थी, एंड गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ वॉचिंग ऑन अ PS5 गेम जिसकी एक्सेसिबिलिटी सबसे कम है पूरे कंट्री में, ये जो होता है कॉन्सोल गेम्स। कॉन्सोल की एक्सेसिबिलिटी सबके घर पे नहीं होती, बट स्टिल आई गॉट 10K पीपल टू वॉच दैट। रीज़न, दे लव द गेम। AAA गेम्स की हमारी ऑडियंस बिल्ड हो रही है। अब मेरे को बोलोगे आप, ओके, मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ ना, फिर आप मेरे को बोलते हो ना कि हाँ व्यूज़ आपके नहीं आते ट्रिगर्ड या इनके से, तो ट्रिगर्ड टेक्नो उनकी ऑडियंस बेस अलग है। नो ऑफेंस टू एनीवन, आई वुड जस्ट, बहुत लोग देखते हैं, बट मेरे को जो फील होता है कि उनके पास जो ऑडियंस है दे आर काइंड यंगर जनरेशन उनका पूरा। जो लोग सुबह उठते खाना वाना ब्रेकफास्ट के टाइम पे बैठ के देखते हैं, जैसे हमारे टाइम पे हम सुबह उठ के डोरा द एक्सप्लोरर ये सब देखते थे, क्योंकि हमारे पास और कोई मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था जब हम छोटे थे। तो आज की डेट में टेक्नो की जो वीडियो वो इतनी ईजी होती है फॉर अ किड टू अंडरस्टैंड कि वो उसको कंज्यूम कर सकता है। तो बच्चों को जो चीज़ समझ में ईजी आएगा वो चीज़ वो देखेंगे। टेक्नो की जो वीडियो देखना वो बहुत इजीली समझ आती है, समझ रहे हो। तो अब के जनरेशन में मोबाइल का जनरेशन है, तो उस लेवल की जो क्लैरिटी, उस लेवल की जो वो स्मूथनेस लाता है टेक्नो उसके वीडियोस पे, वो मेन रीज़न है। वो हम लोग नहीं ला सकते, हम लोग लाइव स्ट्रीमर्स थे, वो एक स्टोरी टेलर है। टेक्नो से स्टोरी टेलर नहीं है इंडिया में कोई, आई गेस आई फील टेक्नो ऐसा स्टोरी टेलर कोई नहीं है इंडिया में कि वो इतना अच्छा स्टोरी टेलिंग करता है। तो स्टोरी टेलिंग उसकी स्किल है वो, तो वो सारी ऑडियंस उस जो भी ऑडियंस को स्टोरी देखना वो देख पाती है। तो उसकी क्वांटिटी तुम देखो, उसका कंजप्शन देखो। अभी तुम देख लोगे कि कॉमेडी कंटेंट सब कंज्यूम कर पाता है, राइट। बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, कॉलेज वाला, जॉब वाला, हर बंदा, तो वो उसकी ऑडियंस सबसे बड़ी होती है कॉमेडी की। और उससे बड़ी ऑडियंस टेक चैनल्स की ऑडियंस इतनी बड़ी क्यों है? छोटा बच्चा भी मोबाइल चला रहा है, बुढ़ा भी चला रहा है, वॉचमैन भी चला रहा है, ऑफिस का हेड भी चला रहा है, बिजनेसमैन भी चला रहा है, ओनर भी चला रहा है, टेक हर जगह। तो वो एक मोबाइल, इमेजिन करो कि एक वीडियो जाती है कि मोबाइल की रिव्यू, ठीक है, टेक चैनल पे, जो प्रॉपर टेक चैनल, उसको हर बंदा देख सकता है, समझो। हम लोग जब कुछ डालते हैं बीजेएमआई, तो सिर्फ बीजेएमआई की ऑडियंस देखेगी उसको,
उसका बीजीएमआई के अलावा भी बहुत बड़ी ऑडियंस है। खुद बीजीएमआई में इतनी बड़ी ऑडियंस जो हमें जानती नहीं होगी, समझ रहे हो? खुद बीजीएमआई भी ऐसे जगह, मतलब समझ लो, एग्जांपल देता हूँ, गांव में लोग बीजीएमआई खेलते होंगे, बट उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, पर उन लोग खेलते अपने मजे के लिए, समझ रहे हो? उन्हें फर्क नहीं पड़ता कॉम्पी से। वो वाली ऑडियंस कितनी बड़ी होगी सोचो। God's Reign, we know them of how they kind of get back into the groove. I'm pretty sure everybody still has that. वो वाली ऑडियंस कितनी बड़ी होगी सोचो, बहुत बड़ी होगी। मार्केट गॉर्डन यहाँ पे होता है। तो ये बात मैं आज इसलिए थोड़ा लॉजिकली बात करता हूँ कि बहुत लोगों को जो डाउट्स होता है ना, अपन कोई बोलता नहीं, तो लेट मी टॉक अबाउट इट। मार्कोस या गॉड्स, व्लॉग कैटेगरी की ही देख लो। हाँ, व्लॉग्स नहीं, व्लॉग्स का भी मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़ा जो मार्केट है आई थिंक दैट्स टेक जो है सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से। उसके बाद आई थिंक आती है कॉमेडी। क्योंकि कॉमेडी देखो, मैं जब यूट्यूबर नहीं था गेम में तो भी मैं देखता था, अभी भी मैं देखता कॉमेडी, तो फन है। अब कोई बच्चे लोग ऑफेंड मत हो जाना और ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी मत जाना कि स्काउट ने कंपेयर कर दिया। मैं डोरा द एक्सप्लोरर जो कंपेयर किया हूँ वो एक गुड वे में कंपेयर किया, कि उस टाइम की टॉप चीज़ थी वो। डोरा द एक्सप्लोरर, स्वॉट कैट्स, पावर ऑफ गर्ल्स, फिर और कौन सी ये सब जो टॉप नॉच, ये छोटा मैम फोटा मैम नहीं बोल रहा मैं, द प्रॉपर कार्टून जिसके लिए हम लोग पागल थे, वैसे ही उस टाइप का क्रेज़ है आज के डेट में फॉर स्टोरी टेलिंग गेम्स। जो अंडर 18 ऑडियंस है उनको, बहुत सिंपल चीज़, इसको छुपने होने वाली बात नहीं है। भाई तुम सोचो ना, भाई मैं तो बचपन में तो डोरा देखा बोलती थी कि वो देखो क्या है, मैं भी देख बोलता हाँ वो है समंदर। मैं बचपन में ये करते थे अपन, वो इतना इन्फ्लुएंस था। साला पावरफुल गर्ल्स देख देख के ऐसा लगता था भाई जो हमें भी कोई वो पिला दे, हमें भी पावर आ जाए। What is success mean for? Success means if I can get anything for my family and stay happy, that is success for me. अबे एक समुराई जैक किसने देखा है? वो उस टाइम का एनिमे था। समुराई जैक उस टाइम का एनिमे था साला, उस टाइम का बेस्ट जो बोलते हैं ना एकदम इन टर्म्स ऑफ एक्शन, समुराई जैक था। बहुत लोगों को इधर आज की जनरेशन में नहीं पता होगा समुराई जैक एग्जिस्ट करता था, भैया इट यूज्ड टू एग्जिस्ट। आप भी सौरभ जैसे ब्लॉग सुनो यार, मैं स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा यार। व्लॉगिंग में आई फील लाइक कि बहुत टाइम देना पड़ता है। अभी काशी गई हुई ना सिंगापुर में, उससे मंगवाऊंगा सारे वहाँ से खिलौने सारे। SPD, अरे हाँ पावर रेंजर भी अलग था। Why don't you make fun challenge videos? बना सकते यार। हाँ क्या हुआ? ऐसा ना? If there is a ban coming in from either one of the teams, and also Mridul, eye on the speedster, if there is one. Oh, indeed. Well, everything gets focused on the bans coming up from both the sides. Yes, it is going to be Marcos Gaming and God's Reign. Very much excited to see what these players are ready with, and there are the bans. Marcos Gaming will be banning the Dodio, whereas the God's Reign go for a new ban. Let's see
from both the sides. The first pick has been awarded to Kurim. Let's see what he chooses. Giorgio, you've seen how much of an annoying Pokemon it can be, and Kyo, he got that for the team, and initially then Revenant banned in the game too. Right now, Marco is out of the gate itself. Do not डॉडरे बैन में म्यू बैन हुआ along with the Mew also. हाँ मैं म्यू को बैन करना चाहिए पता है म्यू बहुत माइंडफक है As you said, the choice is coming through Walk. Immediately goes out, picks out Sizer. On the other end, Kyle, he comes out with the Sylveon along with Scepter, seeing that the Tyranitar is available, making sure that Tyranitar is going to be very crucial on how they play with the Ancient coming up. But again, Scepter needs to be helped with a healer, and I'm looking forward to who that is going to be. Marco's understanding that Godsrin are not looking forward to the Urshifu. Snowy immediately picks it up, and Kyurem becomes their healer with the Blissey. कैसे But स्क्वाड then बढ़िया मैं again, आप बताओ as far as the Pokemon Unite Asia Champions League is concerned, I am going to see that Urshifu is getting involved a lot from both of the team's side. We are seeing that Snow is also going to pick up that Pokemon, but look and wait for it. We have a Tyranitar coming from the side of Scepter. So again, both the sides getting guarded up with a lot of defense and brutality. We also talk about a healer support coming from the side of Kurem, whereas Noxie is all set Yes, with the Eddicos. alright. Wait for it. Omen is actually going to go for a talent ओ game. भाई I'm really excited to see this. And Omen, we've seen him play really very efficiently and very भाई amazing. गॉड से स्केप्टर तो बीटी दे देगा अगर वो पूरा फॉर्म हो गया टाइंडर ले लिया हाँ ना But in terms of the exchange, in terms of the preparation phase, if you want to talk about Muram picks up Snowy takes up the Sizer and Wall switches back to none other than the Gardevoir. And this is what I was thinking. Wall generally plays the range attacker, likes to play along with the team rather than being in the forefront of the team. And we have seen at all time God's Reign do want to kind of help out Walk to survive longer and the farthest, making sure that his Psyshock does a lot. स्कोर प्रेडिक्शन बॉयज Now God's Reign and Marcos are ready for match 2 here in week 3 of the India Region Asia Champions League. So go. Well, here we start with Marcos and God's Reign. Yes, it is a beginning where now each of the sides would be busy in the farming. The very first 3 minutes matter a lot, and then the Reggies coming up. We saw how True Rippers were focused a lot on getting those Reggies in the very first game, but then the second game they were more focused on getting damage on Team Revenant. Now, talking about the match between Marcos Gaming and Gotrain, both of them are here for the battle. Marcos aggro खेल दिया 9 against the scoreline of इट्स गुड आई इट्स गुड Omen stuck in the flux. All he's doing right now is leveling up. He's like, there are wild Pokemon. Let me just take it up, deny it from happening. But Kyle with the growl. Marcus will dominate because GR is going to play 4 player half the match. Get back and हाँ try रे to come out. GR में जो पता है कैसे देखो GR में हैं हाँ GR में जो टाइटर है वो जो है वो जब तक अपने फुल फॉर्म पे नहीं जाता है 6 या 7 लेवल पे तब तक वो वर्थलेस है डेड है तो उसको बनाने के लिए बहुत फीड देना पड़ता है बहुत फीड better day for them at least. Irfan, They you can are obviously planning leave. for No it problem a with that, lot. bro. Look at that. But Marcos Gaming is here to defend like the beast, sending them back Mohammed to Singh base. इसमें डिफेंस पता होना It's चाहिए first chance that they could have also got the knockout. The players must have been KO'd. Marcos adding the KOs. Level 9 yes level 9 The पे KO synergy to the goal post. Level 9 tough Now है. it's 49. Oh, it's a 50, a half century done in the very first 2 minutes. A great head start for Marcos Gaming. Right now, Marcos, yes, are having a good start. Little advantage in the goals as well. But how far will it go? Because God's Reign, they're looking better. And you can see how they're able to diverge the players of Marcos. You might think that, yes, Marcos were the ones overextending and trying to deny their mid lane. But that has opened up a vulnerable spot for them. Look at the numerous players who were super low. Unfortunately for God's Reign, they were not able to follow जी up with देखना टैलेंट को पूरा नहीं कर रहे will हैं be able to back off. But again, good intention from there, and they see wild Pokemons that are already in the mid lane. They're like, we'll take यूनाइटेड सेकंड में उसका लेवल 9 पे था हाँ साथ में खुलता उसको level दोनों up, and then look forward to the fights as we progress further. But for now, लेवल 9 से टैलेंट एकदम बेकार है need to look forward to वो getting दिख रहा है पीछे से छोटा सा है गंदा सा शक्ल वाला still. ये बड़ा सा एक जानवर बनेगा बड़ा सा डायनासोर बन जाएगा Well, yes, exactly. And look at that. Yes, फिर वो ओवरपावर्ड है behind of the scoreline, but oh, they are covering up God's Let's see. Not much far away from that.
bringing her दो leveler, दो leveler. bottom lane. It looks like it is going to be a difficult GR battle. is playing pretty good, huh? No, the questions have been answered. GR बहुत अच्छा खेल रही है. Pokemon being sent back to the base and now Divine at the scoreline of 28 more. मतलब टैलेंट को देखो, टैलेंट कितना लेवल था और 8 पे ऑलमोस्ट हो गया, 9 होने वाला है. It's more focused towards हो गया लो. the bottom अब देखो lane. कैसा बनेगा, जानवर बनेगा बड़ा सा. The Reggies are also available. Yes, at the bottom lane, the Reggie ये आ गया. and Marcos is already there to take it. Now the Reggie is being available to them. अब मारेगी Can देखो, अब change their देखना. fate in this middle part of the game. It looks like Godzin are going to be. Snowy तो मार रहा है काफी. Snowy jumping in the flux. He doesn't care. Using his teammate's eye shock wall. Brilliant assistance being provided over there. And the only player surviving is Care. Now Marcos might have lost the goal zone on top. So Marcos has GR aggressive game. lost on top. Will deliver a big blow. GR अब aggressive खेलेगी. And make sure they're unable to do anything. And with just 3 more AS energies to score, they're still looking forward to just running around. In the meantime, God's Reign, they're looking forward to taking up a big lead. Oh, Shifu comes in the mix, but a little bit too late for the party. उसको मार नहीं सकते स्केप्टर को अब. No invitation, no entry is what they say. Well then, Scepter को talent मार ही नहीं being सकते. added by the side of Godzin be ये क्या नहीं ठग रहा है. हेलो भाई, क्या हो गया इंटरनेट को? all trying to stop the Reginiki. Sizer is here to help and ball trying to stop the Reginiki. Sizer is here to help. Gardevoir and भी, now Gardevoir भी, Samic वो भी being mage है left ना. with no Pokemon, but they are busy at the top end. Why? The destruction is already caused from Godzin. So Godzin playing from the two sides. Talent रहा है देखो. One side already awarded to वो Reginiki. देखो ना कितना HP Handle उसका. it while Godzin actually coming up in the bottom lane now. The points being added. Yet it is Marcos maintaining a difference of 50 points. ये देखो कैसा गंदा सा. Pushed to their flux and wanted to eliminate players of God's Reign. This time God's Reign are doing that. ओ भाई, Survives, delivers क्या हेल्थ स्टिल है उसका. KO streak and the only player surviving was the Oh! Scepter on none other than भाई crazy मारा बे. along with the slow bro as well. साइथर क्या मार रहा है? Streak coming in. साइथर ने उसका ना? If I'm not wrong. He's going to be super happy and Volk in the meantime, what was he doing? He was साइथर क्या मारा? scored on the top lane, destroyed another goal zone. Therefore, both the teams at this point are kind of vulnerable. But God's Reign, who look forward to taking साइथर away OP the वे. lead, they lost the bottom lane battle. It is Marcos who are back in control and a 50 goal difference. Regirock back in the game on the bottom lane and Marcos this time again looking forward to quickly taking it up. But God's Reign always look forward to the Regieliki on top. They wanted to cause a little bit of trouble, but Divine was the only one. Divine on this slow bro is Divine able gave to do damage. But somewhere I feel like he's unable to play with his teammates. And he's taking these hits coming in, this Vicus blow and throat chop coming through. But for how long will he take it? Because Kyurem is here, finally put an end to this fight and eliminate him. But looks like Divine still has something to say. He's dragging 3 players. भाई वो 3 प्लेयर पे कितना टाइम लिया पता है? Finally gets KO'd. ये साइथर नहीं है भाई, मेरे को पता है भाई. To actually take down that slow bro. So definitely a great performance coming up from the side of God's Reign. That 3 of the Pokemon. अबे क्या मार रहा है वो सिफू? And oh, okay, now there comes a KO. Marcos Gaming once again picking up the battle, taking the Reginiki into their half. Everything is looking great for them. The Unite move also comes in, knocks the Scepter, taking a lot of damage. Marcos Omen played sent back to the insanely base. good. Talent Flame is no more available. Every single thing is going against God's Reign right now. A KO streak coming up from the side of Gardevoir and Marcos Gaming Marcos क्या is खेली being है? unstoppable and undefeatable. Pull yourselves together, God's Reign. One, I would say, भाई खत्म कर दिया God's Reign ने गेम. thing that happened was a Unite move on Omen, which was blocked just by Snorlax, nothing else, and therefore everything fell apart one after another. Players from God's Reign just started falling apart like puzzle pieces or blocks of Jenga, if you want to say. God's Reign somehow नहीं खत्म नहीं हुआ. they're able to destroy another goal zone on the bottom, which now मार्कस makes का the फिक्स entire डोमिनेटिंग वाले हैं. completely vulnerable. both बहुत on the top and the मेटा bottom. ओरिएंटेड आई गेस. But in terms of a big goal difference, God's Reign are the ones who are on the back foot. Well, again, Marcos changing the fate of the game in the middle of the game. That was a great sight to see. Again, moving forward with Marcos Gaming right now, 360. भाई वो क्या मेल्ट किया है bro, क्या मेल्ट किया है? But Talon Flame is busy going to the goal post. Oh, would he be stopped by the Snorlax? Yes, he would be, as one of the first
Oh no, not even the Reggie coming into their half. Marcos Bhai. Gaming once again winning it all out in the bottom lane. The God's Reign being भाई pushed mindfuck कर back दिया to मैं their उसका. base, back to back. The Pokemons being sent back, knocked out, being fainted. Every single thing is going out of the hands of God's Reign right now. अगर अब Last 2 गॉड्सन minutes, ने now everything depends on गॉड्सन Rekuwata. ने रेक्यूजा They ले have लिया. the unite moves available. भाई And they तुरंत need to ले utilize आएगा. it. Look at that. यार सीधा Both के of the teams invested in the Rayquaza. Oh. Rayquaza goes down. Marcos Gaming. Marcos winning just the ended the very game. first game. I'm damn sure about Marcos it. जीत गई. Look at Marcos Gaming. What a wonderful play from their side. हमारे को जीत गई. Nothing to stop them. We just saw telekinesis to stop things all, and you can see Godzilla understood. There is nothing in the Nothing. back भाई ये तो them. क्या भाई. Even पर इतना you जल्दी might क्यों say लेना that था? There is around another minute and a half left, but Marcos will reach a threshold, or I would say a graph of unreachable heights even in that 1.5 minute left. Surrender तो होना था, option Gain experience, logic नहीं collect बनता chaos है. energy, get back to a push on the bottom of the top lane. बहुत बुरा They मारा will है. buy time, delay the inevitable. सैंडर बनता है अभी से कमबैक था ही नहीं इसमें. Marcos, what a play. Comeback कैसे Especially, होगा? I think, before I could take a glimpse of how the Unites were. I think Scepter का वो जो seeing Scepter वो जो था फाइट लेना, I feel that was not correct. कि अकेले रखूजा कैसे ले लेता हो? चांस है मिल जाता रखूजा, बट वही ना यार टीम के साथ लेना पड़ेगा ना मोहम्मद. अकेले कैसे मार देगा वो बताओ. गार्डेवर साइथरन उर्सिफू एक टीम में इसलिए. हाँ एक बार वो भी देखो ना भाई, वन ऑफ द हाईएस्ट डैमेज डीलिंग मेजेस इस गेम का जो दो ही है, डेल्फॉक्स एंड गार्डेवर. उसमें गार्डेवर एक है, बेस्ट सिक्योर कैरेक्टर उर्सिफू वो है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटा कैरेक्टर्स साइथर वो एक है, मतलब और मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर स्नोरलैक्स है. तुम चार तो ऐसे कैरेक्टर है जो मेटा ओरिएंटेड कैरेक्टर है, जो ऑलरेडी मेटा में जो मतलब बोलते हैं ना जो ओवर पावर्ड होते हैं, मेटा के राउंड चलते हैं, वो कैरेक्टर्स ऑलरेडी चार पिक थे मार्कोस के. आई फील यार टैलेंट फ्लेम वाज नॉट दैट ग्रेट पिक. हाँ बहुत, तुम देखो ना पहला चार पिक कितना डोमिनेटिंग पिक है ब्रो, इट्स जेन्युइनली डोमिनेटिंग. आप मैं इवेंट खेलता हो रे टैलेंटर मेटा में तो. हाँ टैलेंटर को आई गेस पूरा सपोर्ट चाहिए होता है ना. टैलेंटर खेलने के लिए आई फील कि बहुत सपोर्ट देना पड़ता है. ओनली देन टैलेंटर इज पॉसिबल टू प्ले. टैलेंटर विदाउट प्रॉपर हेल्थ सपोर्ट इज क्लोज टू ट्रस्ट अगेंस्ट एक्सपर्ट प्लेयर्स. हाँ यार मतलब वो साला एक तो उसको बड़ा बनाने के लिए भी भैंस किया टाइम दो, बड़ा बनने के बाद है जो उसको सपोर्ट भी दो. गाड़ी पर स्टैंड देन साइडर किल्स इट. हाँ वही क्या उन लोगों ने पूरा टाइम. आप भी खेलेंगे इसके बाद थोड़ा एक दो मैच खेल लेंगे इसके बाद. हम दोनों प्ले चार्जर यार, चार्जर आजकल अभी भी इफेक्टिव है क्या यार. मैं मैंने एक बार चाय मंगवाया तो गैस मेरे को है ना एक पावर नैप तो चाहिए होगा. पापा को बोल के नीचे से भिजवा तो किसी को. नो ट्रू डैमेज गया 6000 का. पापा फोन उठाया. एक सेकंड दे दो.
आज 10 स्ट्रीम होगी। आज हमारी अर्ली गेम में बहुत ज़्यादा ओपी है। रात को रोलर रेस, रात को रोलर। अरे भूपेश, ये बनवा दे यार, थंबनेल बना दे रात को रोलर चैंपियंस का। वो पावर नैप कहीं फुल स्लीप पे ना मतलब, नहीं फुल स्लीप पे नहीं जाके चिल मारो। सॉरी गैस, मेरा थोड़ा नींद पुरानी हुआ है। पता है मेरी आंखों में आपको वैसे दिखे यार, मैं बताऊँ ऐसा आंसू आ रखा है मेरी आंखों में भी। तो इस पॉइंट पे इतना आ जाता हूँ, मेरी पूरे आँख ने मैं खींच के रखा हूँ लेजिट भाई। मेरे को अलग से आंखों में आंसू रखे हैं, और नींद में आते ना जो उबासी मारने के आते हैं। मेरी आँख लाल हो गई क्या? फक नहीं लाल नहीं हुई है। हाँ भाई होगी लाल, व्हाट द फक, लाल हुई क्या इधर देखो, मैं स्ट्रीम पे चेक कर सकता हूँ ना। हाँ नहीं हुई है। पावर ना बहुत है। आईबैक्स टेकरेस्ट ब्रो, आईबैक्स क्या होता है? ये नीचा है, ये क्यों आया यार? ये हट नहीं सकते ये मेरे, ये आईबैक्स क्यों बन गए मेरे कम सोने के लिए? बारातों का तो करेंगे ऐसे। कम सोने की वजह से ये हटता कैसे है? Need to pay attention is how well Marcos is playing with Walk, making sure that he does not get knocked out. His Pokemon does not get fainted. They keep him alive at all times. मर से मैसेज डाल रहा है। He's available in range whenever they're initiating a team fight. Let's see the bans, and it's going to be a side. ज़्यादा होने से भाई यही तो नहीं हो पाता जिंदगी में। They're like every Pokemon was something that we had to be worried about if you talk. पूरा सजाने से 2 बैग मार के सो जाओ। स्लीप साइकिल सही था, वर्कआउट के साथ प्रॉपर स्लीप भी होना स्टार्ट हुआ है। अरे यार 8 से 10 घंटा स्लीप, इतना टाइम किस पे? 8 से 10 घंटा सोने का? हेलो भाई, रात का सीन क्या है? खेल रहे हो? खेलेंगे 8 आवर मिनिमम नहीं होता, मैक्सिमम होता 8 आवर मैक्स। भाई तुम्हारे पे इतना टाइम कैसे आता है? हाँ वे तुम्हारे पास इतना टाइम दिन में जिंदगी में कैसे मिल जाता है भाई? 10 घंटा कैसे सो सकते हो? कोई ना, अपन इसके बाद 1 घंटे का नैप ले लेंगे मस्त सेक्सी सा। 8:30 बजे उठेंगे, फ्रेश होंगे और 9 बजे स्ट्रीम करेंगे। कोई अच्छी टीवी सीरीज सजेस्ट करो भाई, मैं खुद नहीं देखता यार। क्या मैं अकेला जो 5-30 मिनट सोता हूँ? तुम टाइम गिनती करते हो क्या 5 घंटे 30 मिनट का? Previously, so Scepter. क्या बैन हुआ इस बार? So Snowy takes up Tyrant hour. ओके ओके, इस बार टायरेंटर को सपोर्ट मिलेगा। ओके चलो लेट्स सी। अबे इस बार स्विच कर दे, मतलब मार्कोस में इस बार ये है। I want to Let's say see. is like Walk. I'm a little bit surprised. I was not. वॉच मैंने जो Walk नेटफ्लिक्स would be playing this सेकंड में कंप्लीट कर दिया है मैंने। Final preparation phase as well. Walk has not decided to change. I thought. Alarm he से would उठते हो? take Glacian and give somebody else the. अंदर एक सिस्टम बन गया शरीर में अब ऐसा कि सुबह होते ही, ठीक है, मैं जितना भी सोऊं साला 5 घंटे में उठ जाता हूँ। जिया ने साइथर बैन कर दिया, एमजी ने टाइटल ले लिया। हाँ ना क्या हो गया बे? And go! Let's set go! We start with the game number 2. And we have a pause time.
फाइव आवर्स काउंट करता हूँ नहीं बे, वो बॉडी में सिस्टम बन गया है इसकी, लेजिट बॉडी में सिस्टम बन गया है। मैं कितना भी वो 5 घंटे पता है, मैं कितना भी सो मेरा 5 घंटे में एक बार नींद खुल जाएगा। फिफ्थ मतलब 5 घंटे का तो सोऊंगा ना कि इंस्टेंट नींद खुल जाएगा कि फाक है भाई। फिर अगर वापस सोऊंगा तो मैं सो पाऊंगा, फिर मेरा मन ही नहीं करता सोने का। आज तो वैसे मैं रैंक पुश कर रहा था कि मैं माइंड फक हो गया मेरा आज। वेटरन गया मैं, वेटरन से डायमंड आ गया वापस। ब्रांडेड गेम है इसके। हाँ करेंगे, शेड्यूल 5 में करेंगे। सोलो का एक्सपीरियंस, अरे भाई क्या बताऊँ भाई। मतलब मैं एक तो ये मैंने पता है वैलोरेंट से 4 दिन का डिडॉक्स लिया है कि मैं नहीं खेलूँगा सोलो ज़िंदगी में। आज के बाद मैं खेलूँगा सिर्फ 2 मैन या 3 मैन, 5 मैन भी नहीं खेलूँगा। साला उस गेम से छोड़ के मैं दूसरे गेम में रैंडम खेलने गया, यहाँ पे दर्द। इमेजिन करो तुम पोकेमॉन खेल रहे हो, तुम्हारे साथ पोकेमॉन में 4 के 4 स्क्विशी कैरेक्टर, तुम क्या करोगे बताओ। वैसे होता है सर। Let's begin. And the timer already started. God's Rain going forward. In the bottom lane, we do see that the Pokemons have fired up the bottom lane, and the force goals being secured by Marcos Gaming. Walk will not be able to run away. He's trying his best, but having that Ninetales is causing them trouble. But somehow we आओ देखते हैं मार्कोस का अगला डोमिनेटिंग and now he should be getting an advantage that his, I would say, passive would be activated, but looking at the hits coming through, they did not give him a chance to run away. So he'll be sent back. Look at that, Nothing to be I will worried give up. about. Initially, Marcos, yes, have control of it, but what Marcos are doing are even a bigger play. If the Gardevoir doesn't work for God's Rain, which they've sent to the mid lane, Marcos on the other क्या end लगता है guys? already Marcos? evolved I feel Marcos. to a Glaceon. That's the reason. I was for a second surprised. पोकेमॉन में कुछ रैंडम ऑर्डर तो Going मिलते and हैं। leveling up, and the mid lane. There it वो is. बन सलमान खान बन जाते Speedster पोकेमॉन to be में लोग। leveled up. The Speedster will eventually evolve with goals being scored. साइथर बन गया ना। Making sure the ranged attacker has a lot साइथर of बन गया damage है। dealing ability as it tries to use its attack. Maybe the shards coming through, whatever it is, spears coming through. They want to make sure that it is ready. Right now, Glaceon is one in the top. No, I don't know why Ninetales सब लोग पिक करता है। I don't find him Taken from God's Rain. interesting. But Marcos on the other end still have the lead in terms of the overall goal picture. Well, yes, with that we Divine. start. देखो वेस्नोलेक्स देखो ना क्या इरिटेटिंग माइंडफक कैरेक्टर। देखो 1 HP में मोटा लेट जाता है ऐसा ओके, कोई मार ही नहीं पाता उसको। And we begin with God's Rain. 2 मुंडी वाली मुर्गी 3 मुंडी वाली मुर्गी बनी है, देखो 3 मुंडी वाली मुर्गी बन गई देखो। Taking this score line to 71 to 50. वो तीनों मुंडी आधे आधे करके मारती है पता है। Mid lane disturbance coming up here as Kale, trying to get. स्टार्ट नहीं ओके। Ninetales सीसी की यूज करता है गॉड। Urshifu being unstoppable now. Marcos coming back to the bottom lane, whereas the top lane would be procured and saved out by Goldspeed. ये अंडा भी बहुत हील करता है साला। Talk about top lane or bottom lane, it's swinging, it's changing. दे मुक्का मारा। Troublesome situation. देखो Wanted to help. मोहम्मद अली बना हुआ है। Understanding that there are players pushing him, especially the Urshifu itself. उर्शिफू मोहम्मद अली पता है Attack which you can पोकेमॉन pop का। up, boost it, and immediately I would say take it is going to be a wicked blow, and that's the reason Kyurem wanted to back off. But ready now क्या it's मुक्का? going to be Murem also coming into play, and Kyurem will be there to help him out. And you saw the icicle charge are already coming through, making sure it hurts a lot. But there are 3 players, therefore Urshifu will And be this- able to back off. But they सीसी मतलब क्राउड कंट्रोल। some Stand हो गया आगे से। and the Pokemon goes on. It's going to be Noxie, and they do lose a healer. In the बहुत जोर से meantime, मारा भाई। bottom lane gets pushed, and Marco is taking charge. Well, मोटी yes, स्कर्ट वाली and आंटी कौन है? right अरे now, यार Lucifer ब्लिसी हो goes जाता for है ना, the ब्लिसी bottom है। lane. Marcos क्या Gaming बात करते हो looking तुम लोग? great What with the the performance, and actually moving forward they are able to deal the damage on both range. आल बाल When बोलते you हो, talk मोटी about स्कर्ट वाली the आंटी amount क्या of होता है? consistency that they're making, they also need to get a हाँ, card on इसकी Reggie. आँख- Yes, they would be taking it in their hands. We भाई saw मार्कोस the अलग first dominating खेल game रहे to हैं। that when they actually दे had मुक्का। those Reggies for them, it worked out. And now Yes, very focusing clear, very once again yes, on yes, getting yes. those Reggies. This I time love it my would be God's voice Rain a lot. getting the Regieleki for themselves. Now they did lose the Reggie on bottom, and that's the reason. हाँ ना बे all इतना the क्रिएटिविटी players है of इसकी Marcos आज। were on bottom.
will quickly take Regieliki, but if they don't, as they were switching lanes, they would have come from Regieliki as well. But right now, a big Unite being used from Valk. Not too sure if it was a misclick because it didn't do any kind of hit. But right now with the drill pack coming through, he does. Dodrio कितना tough है? I've never played Dodrio. Will be able to help out. It was a 4. इसको तुम बोल रहे हो ये healer है? There was nothing he could do. Immediately runs away. Curem also starts backing off. His teammate Rex will help him out in that manner. Therefore, they do lose a player, but not any lane control. Back into the fight is going to be Scepter trying to go in for heavy hits, but a big Unite coming in from Omen, which pushes the players back. Along with that, a Psychic coming through. Extremely tough. Delivers a knockout to another than the slow go, which gives them an opening. Godsend immediately destroy the bottom lane goal zone, and now Marcos. They are looking forward to getting back in the game. They deliver a knockout to send the players back home, along with Glaceon helping out. And you can see what God's Reign thought that they had got control in terms of was just for a second, and was also only to destroy the goal zone, not to take the lead away. And whoa, Volk भाग गया. again with a drill peck. Another knockout. He's not stopping with his pecks. Indeed, and the Dodrio would be adding a lot for the side of Marcos Gaming. Getting back-to-back that power, and the goal post now vanishes. Look at the destruction done by Marcos. Yes, they are at 225 points. They have maintained a great Marcos amount of अलग ही consistency throughout this game, where they've stopped God's Reign whenever it was required. वॉच पार्टी के बाद हम लोग थोड़ा सा पोकेमॉन खेलेंगे, फिर स्ट्रीमेंट करेंगे, फिर रात को खेलेंगे हम लोग ग्रुप And गेम. with Unite moves, everything would be going good for their side. Well, let's see what उछाल happens. उछाल के The मार रहे थे Regina बाबा. on the bottom lane, whereas Dodrio is busy adding those points back to back, damage- waiting उसी को for damage the पड़ा luck इसमें. of Marcos Gaming. Here it comes! Oh, The KO streak by Urshifu. No one that we can beat that. 3 coming in from Miriam as well. A brilliant Unite was the Bye-bye, ball, bye-bye. but the block on Divine was just brilliant. This is what I said. Divine is known to play a really good defense. Previously, seeing on the slow I was not too sure, but right now you can see how well he's playing. But Miriam is still causing trouble. Divine is left alone as his teammate falls, and now That's he's like Southern opponent. knocked out. Tornado is He's quite trying to run, but unstoppable. where will he run? There is no berries to heal also. Eventually he'll गया, be मर caught, गया, Divine and मर now गया. you can see he's just running. He's just buying time for survival, and वो तो there dominated is a वो. chance that he can go for a push, but that is not at all happening. There is no way. कुछ रहा मोटा है, कूदता सब उछलते हैं, सब बस वही होता है. But in the meantime, Snowy gets stuck, uses his Unite, trying to buy time as his teammate jumps in, and yes, Really, Blissey really. drops his Counter! leg, making sure he survives, but it does not work out Urshifu for आया, long. 3 जेब people only fighting with मुक्के- 1. I मुक्के think घुसन मार Europe रहा है. should have fought alongside, but in the meantime, the bottom lane is already pushed, and along with Walt playing like a monster, those beaks are piercing God's Reign right now. They're unable to hold Volk on that Dodrio, and everything that they're Good planning to commentary, do, it's just, I Yeah, would the say, commentary. trying to put Yeah, a the stop. commentary अच्छा, line अच्छा था, Marcos वैसे. having a 280 lead. There's nothing that God's Reign are बहुत able कम to मैं get ऐसा बोलता हूँ closer to कमेंट्री के even लिए, the goal अच्छा zone. था. Well, yes, exactly. The counter was amazing from the side of God's Reign, but not to leave Marcos behind. We know what they're capable of. The last 3 minutes, yes, it is going to be a real hard struggle, whereas they are available. सोलह छुट्टी पहन के आ रहे भाई, but ठंड, the defense winter का was season है, guys. strong from the side of Marcos Gaming. God's Reign Scepter. Now, Urshifu, last of the minutes. It's all कैसे चल रहा है? ऐसे जो कभी मारेगा मुक्का किसी को भी देखो जाके. 40 seconds for the final stretch. But before that, देखो कैसे चल रहा है? the goal zone, there is the Tyranitar available, but Tyranitar will खड़ा ही वो ऐसे रहता है. therefore समझ रहे will हो? not have a chance to कोई score. आए. A big 50 will be scored. A little too late to the party, Snowy, but I think he might be able to provide a knockout, send that player back, but before he could, the other reinforcements immediately jump in, I and guess cover therefore for the अच्छा. Scepter will Yeah, be able GR to अच्छा survive. हो Snowy, in गया, the meantime, with the Dark Pulse, is trying to push everybody back, understanding that there is just 10 seconds left, but Divine, because of the heavy slam, he'll be able to immediately jump and get back to his own mid lane, but in the meantime, it's like one खूब grab कहने and McGregor, हाँ, McGregor है. immediately a knockout being delivered. Marcos are not stopping in any direction. Again, I am- the shots coming through. Walk a risky. दे मारा मुक्का. Used his Unite to run away from the Pokemons, and he will be able to run Oh! away barely. But in the meantime, look at what Marcos has done. Before God's Reign हो could get गया, even game closer over. to the legendary pit, Rayquaza has gone again, just like the previous game.
Yeah, GG the हो गया. Rayquaza is gone. Marcos Gaming beating out Rayquaza like it's nothing for them. Once again coming out with the हो power गया, खत्म हो गया. and with the dominance from their side. They're present at the base. GG. Each and every goalpost getting guarded by Marcos like it's their own base for their side. 700 is what we are going to touch. Not stopping yet. Scepter goes back to the base. The base is just two meters far away. Godsend don't have a base. 738, 766. Everything That's Marcos the is pure doing domination. right now. God's reign lost it all, and now they're going to reach. That's some pure 800 domination. points. That's some pure domination. Godsend don't have a base here. They are not even able to step out of their safety, I would say. That's Yeah. all. Dominate That हो गया one भाई. goal zone which is indestructible is being, I would say, just used like a training ground for them as they're fighting with every Pokemon. I don't know, Divine's thought here he made use of his Unite as he stepped out with a power nap. Nothing. Because there is a big level difference in at least 2 levels. 3 levels for a couple of Pokemons, and therefore हजार हो गया it's being भाई. unstoppable. Marcos are decided that with the next 20 seconds left, we want to reach 1000. There is no chance that God's Reign will be able to do anything. Oh, are we going 966. 1000? Another 40 to score, and we'll be seeing 1000 coming up. But Marcos have decided that let them step out. We'll deliver knockout to them. Snowy is still surviving barely, but is still surviving. Noxy finally acts as a distraction, but with just 5 seconds to go, Oh, and भाई, with the भाई, time भाई. up, Pure Marcos domination. clinch and drill their way as they're looking forward to another victory. That was What something a insane. play, Marcos. What a change Disgusting. in strategy, what a change in their own meta of how they play, and it looked Disgusting. indestructible. Disgusting था ये मैच भाई. इश. राम 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 राम. MC BJ भाई. MC BJ भाई. आओ लड़को, किसको खेलना है? वेटरन कौन कौन है? खेलते आओ. वैसे रैंक रीसेट हुआ है. आओ भाई, थोड़ा हम लोग भी खेलें. मेरे को भी थोड़ा जोश चढ़ गया. खेलते आओ. चीट मोड था भाई ये. भाई कॉम्पी में ऐसे मैचेस कैसे हो सकते भाई? ये क्या मारा है? व्हाट शिट भाई, क्या मारा है बे? क्या मारा है? फक ब्रो. भाई कुछ भी मारा है ब्रो. जेन्युइनली कुछ भी मारा है. That entire dragon dance, if you want to see, sits in a spiral form. Before that spiral was complete, Marcos put it down and walk at all times, just like we saw in ग्लेशियन the का first डैमेज देखा तुमने? play. 140 के Being डैमेज. a problem, true because of how they played. Wall played the same way. He was available in any direction, and then Murim to capitalize. And I think that combo worked out, becoming a very deadly one here Yeah. for God's Reign. They were unable to do anything. At least Yeah. till the 6-minute mark, God's Reign looked like yes, they are into the game. You can see. And Take it मैं till मर्सी the को 8th फोटो minute, भेज रही They है. look like they are in the game. But what happened at the final stretch was they were nowhere close to this mid lane, and a big advantage that Marcos took was, let's take Rayquaza, and after that a big level difference was there. Brother. Well, yes, exactly. To correct myself, it was 219 to 280. A 700 climb for Marco. मर्सी को मैसेज भेजा मैं. To talk about the points getting added by the side of God's Reign, yes, Ninetales was somehow a good counter for Tyranitar, if I say, but again, even after having those counters, even after having that Urshifu, Marcos had it all written. A great game from their side, and look at the destruction they have done in the last 2 minutes. Also, a good start from their side, I must say. From the 2 to the 4 minute stretch, they added a lot of consistent points for themselves. Yeah. Marcos unstoppable from every minute, 2 minutes to 10 minutes. You can see they just kept scoring, especially the final stretch. They were the ones in command. But one Yeah. thing that I think God's Reign, how they wanted to play, having मार्कोस the क्या Gardevoir मारा बे? is समझ ही नहीं to आया भाई, कुछ भी understand, मार right? दिया. Making sure that Gardevoir is leveled up. Making sure Gardevoir is ready for every fight. Ranged attack is always there. But Marcos, they denied that from happening.
just like we talked about Sylveon in the first game of God's Reign, in this game you can see it was felt like Gardevoir was कुत्ता बिल्ली बना के nowhere. मारा All बे। times Gardevoir was just being sent back to the base, knockout one after another. Man, oh man, utter destruction. There was nothing else that we could see that God's Reign were able to kind of get a hold of. They were just being pushed off from every chance, every fight. भाई bully time And look bully at time this. पे। This is like Rayquaza has already been taken and then God's Reign are trying to react. And I think as we spoke about it, right? Keeping Walk on the Dodrio on a situation that he's already fighting, whereas on the other end, making sure that their Glaceon is leveled up to such a मैं कुछ भी मार दिया that at genuinely any कुछ भी time मारा। whenever it's facing any Pokemon from the opponent's end, it's always a bigger level up. I think that's why that Wombo combo, if you want to generally when we see, right, it worked out really well. The combo attacks coming through. Very मैं rank push कर good देता हूँ, Masters पे फिर खेलते हैं। communication between the players of Marcos. है ना? I would end up saying it effortless because that's how well they were communicating. They're like, I'm doing this, or maybe this. I know we couldn't hear the comms, but it looked like they didn't have to be worried about their comms. They had to be just playing together, and each other knew what they had to do, and they played so well in terms of tandem and complemented each other. With a lot of accuracy and clarity that Marco's shown in their play, I must talk about God's Reign that they the strategies that they come up with. It was some good tackles that they had against the choices of Server try gaming, Mobile Legends. and going with the game. I don't think it's there in brilliant India. till the last 8 minutes. It was just Is a it there? difference of around I don't think 61 so. points if I'm not wrong, and having a difference of 61 I'm playing a points game right that now. can be covered by a single Pokemon having a scoreline procured. खेल But रहा हूँ again, when you talk about getting that Rayquaza in 8 seconds, surrender to him. Yeah, man, that was just insane. Before I could see the time or what happened, where did already Rayquaza done. it's gone, Yeah. disappeared. God's अरे Reign, मावेस ओमेगा भी they था ना have करेंगे। one more match. सोच and ना। It looks like their position is Try to going to be listen, at यार, but finally sing with with Marcos Tapal. getting themselves समझो another the victory stream. here on week 3. They can't. will be putting themselves There's in the certain second spot and things pushing because of Revenant which and I can't. SATL to the third spot. As of now, this week does come to an end where Revenant and SATL will be looking forward to jumping back into the game. But after Revenant facing a loss as well as SATL facing one loss, it's going to be very interesting of how things spin Wow, it from is here, crazy, right? bro. Because Revenant Correct. has a chance to win and also lose. And because of that, the positions might also change. We ended हाँ, we रात को ended खेलेंगे ना seeing bro? one of रात these को two खेलेंगे। teams itself getting pushed to the fourth. In this entire, I would say, overall Asia Champions League, right, Mrudal? Two teams. True Rippers never got a chance to jump to the land, and Marcos on the other end were the first team to be bro, going back. मैं क्या And बताऊँ, both it's- these teams are कौन functioning company so को well बोलो here. यार। Nobody else has a Yeah. chance. Exactly, and this is where the tables have turned. The time where they have to perform for their nation, for their country in the Asian region, they are doing it well. For now, they're amongst themselves, they're among their competitors which are there to represent the country. A great performance from Marcos Gaming and True Rippers indeed, and to say it out, great work, all done, all set Domination for the the way. next stage. I must say that True Rippers, well, let's see who can beat them. True Rippers and Marcos is going to be an interesting one. For now, beating True Rippers was Marcos, and now I'm looking forward to who's going to be able to knock out or feint or whatever you call it, beat the players of Marcos. They are the ones who are looking tough. Now, without a fight, none of the teams have gone away. You saw even God's Reign were looking so well ready, but it was just, I would say, Marcos, as we did say, the clarity, as you mentioned, was just brilliant in terms of what they wanted to do. The Correct. picture was so good, and how well, I would say, that combination of Walk being on the speedster and then Murem playing all around the map whenever his teammates Motor का needed, hairstyle भी whether there करना was a यार। top lane push coming through, whether there was a bottom lane push happening, or in case one of the Pokemons from Marcos's end fainted and was sent back to the base, the other players immediately pushed to that same spot Correct. and caused trouble to the players of God's Reign. So God's Reign, who thought they created a breather or made sure that it became weak, it was denied. And that's the reason Marcos won it really, really well. And we also have Walk here, back on the desk with us. We'll jump for a quick interview with him after winning this second match here in the Asia Champions idea League. होती है यार, Walk, क्या दिक्कत है? welcome back. Congratulations Hi, once what's up? again, Walk. Happy to Hello. see you. Thank you. And How are you guys doing? I'm doing good. Thank you for asking.
Walk, Northeast how are side, you yeah? doing? I want to ask you. After playing the Dodrio, I was surprised on the disc. I was talking about, wait, Walk? Yeah. What was that? Yeah, I mean that kind of happened. We didn't want to give our opponents Dodrio because they're too comfortable on that. So I was like, Yeah. let's just play it ourselves. I thought Northeast I side, like, yeah? I was thinking that at least in the preparation phase you will switch it Yeah. up, give it to one of your teammates, and then this Walk is still playing it. This is going to be interesting. And I think the combo that you, Murim, as well as you played with Dodrio and Glaceon worked out very well. Walk, congratulations. Well, yes, exactly. Well, I have a question in my mind, Wolf. How come you're able to get that Rayquaza so fast? What is your strategy for that? Like, it's like we see Rayquaza and it's gone already. Game one, they just flipped. Like, I mean, we were like, we'll Yeah. zone them, but they just went in the pit and they flipped. And then game two, I was like, I'm gonna mess around, buy time, and then our guys was like, let's just press all the buttons on the Yeah. Rayquaza. So I think that's what they did, and then we got it. Yeah. 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 I'll tell you, before here on the desk, I mean, when we were seeing the game, we were like, Rayquaza just spawned. It's the final stretch. There's no Rayquaza. It was like, it was in the animation and it's gone. That's how Yeah. fast you guys played. And हाँ I भाई, really लोग like Rayquaza how बहुत जल्दी, Marcos is बहुत coming जल्दी. up. So, what are the next plans that you're right now in the league stage? There is True Rippers who are on top right now. Do you want to take them down and get all the points for yourselves and become the first seed? I mean, that's the plan. So that is Yeah. what we want to do. And next week we're gonna be facing against like good the next two teams we face are gonna be like very challenging opponents for us. So excited for those games. Yeah. Wishing you all the best Yeah. with all the games because we are excited to see you guys go on the big leagues. Congratulations once again, Walk. Looking forward to catching you again on the desk. It's become a Yeah. usual for us now. All the best for the entire team. Yep. Take Have care, a good man. day. All the best. Bye bye. Thank Have a you. good day. Thank you. Bye. Man, you see, like they had strategies planned, but once they understood that they're not seeing the players anywhere nearby, their opponents nearby, they're like, let's just take it. We have free access to it. Who wants to Yeah. give away the free access, right? Well, yes, yeah, agreed. And the strategy that he discussed was buying time and focusing on only one Pokemon. We saw how Slowbro took it for himself, and that is how you buy the time. They bought the time from God's Reign, and after that, it was 4 Pokemon doing the job, 4 trainers doing their job, and it was all done. So, great strategy from their side that they're able to gather the attention whenever they want from the opponent team. Yeah, I think God's Reign were today on a situation that they had to be reactive. They Yeah. came to a situation where they were proactive, but Marcos were able to break them down. Same thing happened in match 1 as well of today. True Rippers, when they fought against अरे Revenant, ignore bro, it was इसको True थोड़ी Rippers matter looking in करता command, Vince. Revenant in between on the 2 They're and the greater 4 than minute that. mark and 6 minute mark. Looked like they were getting me back into the groove, but True Correct. Rippers were able to immediately switch back up. But in Yeah, game 2 way was the much eye above opener, that. where it looked like, बहुत oh, ऊपर है. Revenant are back in the groove. We are going for Yeah. game 3. I had thought इसे about it. affect नहीं करता And when there was 40 seconds left, and as we talked with Daksh as well, he mentioned, we saw the opening, we understood that there is time, and we immediately decided to. और बताओ, आज रात का वो कौन सा rather game than है? giving it up, understanding Rayquaza has also not been taken, they immediately jumped back into the fight and took advantage of it. Especially, I think having their unites also played really, really well because Revenant didn't give them a chance to use that. Revenant used their own, and then Revenant, when they wanted to kind of get back into the कॉन्सर्ट पे जा रहे हो 12th को? here, यार अब देखते हैं Marcos, they never let कहाँ पे है कॉन्सर्ट कृष्णा का इस बार? As he said, Last time right, जा नहीं पाया था मैं. knowing that Dodrio is available for picking, making sure that they don't get a chance to pick it up, denied. And that's the reason Walk immediately picked it up. And then understanding that he's already picked it up, let's just make use of it. And using his unite, used it thrice, and at all times it hit and did damage to Pokemons around for anybody in from the side of God's Reign. Well, yes, exactly. पुणे मुंबई को It was 12th है, जा indeed सकते a हैं. great performance from the side of Marcos We can Gaming. actually go. How well they were available with their strategies against Team God's Reign, and today we saw in this week that Marcos Gaming and True Rippers now having that pace, now having that lead. It looks like that they have their journey already set for the stage 2. But then again, there are some more games remaining. To talk about each and everything, Lucifer, we're all set to actually be in the next week. and सीरियसली मत let's ले wait कोई for कोई it. लेता नहीं सीरियसली For our viewers, in case you still have thoughts of what's happening and what the entire tournament in terms of the matches of the other regions as well, there is a link
which you can click on and get more information about. So head over there for all the details about the East Asia, Southeast Asia, India you're watching, and on every Sunday you can get back हाँ दिखाओ गेम बस हो गया यार see what's happening in terms of the action and which सोते हैं नैप लेते हैं expect. Again, letting our viewers know सीधा आते हैं 9 बजे you're looking at a couple of teams who are looking brilliant, but there is still stage 2 where they'll be playing on the playoff stage where they will have a chance to get back in, but that will be elimination. But for नहीं हो पाएगा वो so I don't know Rohit day 3 or day 3 you want to say it for the India region, we're going to be saying bye, but telling you we'll be coming back with a lot more action for week 4. Take care. चलो guys bye bye